नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का आज के वेबिनार में हम स्वागत करते हैं एसबी पास की ओर से। एंड वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन। थैंक्स you for joining us today. We are excited to have you at the third International ACU-CON 24 webinar. This will be an opportunity for us to learn from each other and grow together. Is our honor that we grow day by day, year to year. Hope you take away some valuable insight as we through our webinar to help you live a happier and healthier life. Let's start to this webinar shortly. मैं आप सबका डॉक्टर अंतिम जैन इस वेबिनार में स्वागत करता हूं एसबी पास की ओर से। और इस तीसरे वेबिनार को हम हमारे कुछ सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, एक्यूपंक्चर एसोसिएशन मुंबई, ईशान बेंगलोर और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आज के इस वेबिनार की शुरुआत के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर आलोक द्विवेदी सर को। Thank you, Dr. Jain. On behalf of SB Pass Indore and on my own behalf, I welcome you all to this ACU-CON 2024, which is flooded with loads of knowledge for you all. So, let me tell you some basic things. When we are born, when we take birth, a good health is always our birthright. It is our right whenever we are born to be healthy, to stay healthy till we are no more. So all through life, remaining healthy is our birthright. And nature gives us all sorts of means for you to remain healthy. But the problem is this execution of this physical body is in the hands of our minds. So whenever we do something wrong, we try to go away from nature. Nature, as we know, is our great mother of all individuals. Anything that lives, that is living, उसकी जो माँ है वो प्रकृति है, और प्रकृति जो माँ है वो सारे साधन हमको उपलब्ध कराती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जब भी हम प्रकृति से दूर जाते हैं, अपनी माता से अगर दूर जाएंगे तो स्वस्थ रहने की कल्पना नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा हम इस शरीर के साथ में करते हैं जो अप्राकृतिक है, चाहे वो भोजन के रूप में अप्राकृतिक सिंथेटिक चीजें हों, चाहे औषधियों के रूप में हों। कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम जब लेते हैं तो हम अपने जो मौलिक अधिकार है स्वस्थ रहने का, उससे दूर जाने लगते हैं। आज का जो ये विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य को हम किस तरह से बनाए रखें बिना सिंथेटिक दवाइयों या सिंथेटिक सप्लीमेंट्स या सिंथेटिक फूड के अपनाए। तो ACU-CON में जो है आज हमारे साथ में बहुत मूर्धन्य स्पीकर्स हैं जो ख्यात नाम है, पूरे विश्व में उनकी चर्चा है एक्यूप्रेशर और पंक्चर के विषय में, जो हमको स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही साधारण, बिना बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही बिना किसी साइड इफेक्ट्स के जो हमको स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। तो ऐसा एक जो विषय है वो हम सभी के लिए आज की समय की आवश्यकता है, समय की मांग है। और इसी को देखते हुए हमारे एसबी पास के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अंतिम कुमार जैन, वो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। तो हम सभी
के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मेरी ये अभिलाषा है कि ये आज का जो सत्र है ये बहुत लाभकारी हो। और मैं इससे पहले कि डॉक्टर ए के जैन को माइक अध्यक्षीय भाषण के लिए उनको आमंत्रित करूं, तो बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस। दिस इज गुड फॉर यू योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो ये जो है वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो जिनके लिए भी कन्वीनियंट है वो अपने वीडियो ऑन कर लें। अब मैं डॉक्टर ए के जैन को सौंपता हूं माइक कि वो अध्यक्षीय भाषण दें और एसबी पास के बारे में कुछ परिचय। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं लैंप लाइटिंग और सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ साक्षी जी को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। तो आप सभी के सामने प्रदर्शित है दीप प्रज्वलन। थैंक यू एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथा के अनुसार हम प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना के साथ करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ पलके सहजता से बंद कर लें। अपनी रीढ़ को सीधी रखें। एक गहरी लंबी श्वास लेकर माँ सरस्वती का स्मरण कीजिए। एक बार ओम के उच्चारण के पश्चात हम प्रार्थना दोहराएं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परम आद्यां जगद्व्यापी वीणा पुस्तक धारिणीमभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते
स्फटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। माँ सरस्वती को नमन करें। Relax yourself with a smile. Thank you everyone. आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही मैं हमारे इस संस्था से आप सभी को परिचित करना चाहूंगी। सुंदरबाई फूलचंद जी आदर्श शिक्षा संस्थान एसबी पास इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित है। पिछले 30 वर्षों से हम शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर A.K. जैन द्वारा इस संस्था की अध्यक्षता की जा रही है। संस्था विशेष रूप से होलिस्टिक मेडिसिन जैसे योग, प्राकृतिक चिकित्सा व एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में कार्यरत है। इन सभी के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सेज का संचालन भी किया जा रहा है। वर्तमान में YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश का पहला सर्टिफाइड योग स्कूल है, जो नियमित रूप से योग के कोर्सेज का संचालन कर रहा है। प्रशिक्षित करने के श्रृंखला में योगा वॉलेंटियर, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर व योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर्स की देश और विदेश में ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से दी जाती है। संस्था प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भी ऑफलाइन और ऑनलाइन रूप से हाइब्रिड मोड पर विभिन्न सेमिनार, वेबिनार व प्रशिक्षण का आयोजन करती है। संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर निशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा उपचार शिविर का आयोजन भी किया जाता है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN पुणे के द्वारा संस्था में गतिविधियां संचालित की जाती है व संस्था इससे संबंधित है। प्रतिवर्ष सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज का संचालन भी नेचुरोपैथी के क्षेत्र में किया जाता है। संस्था एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में 2001 से भारत के शीर्ष एक्यूप्रेशर शोध एवं उपचार संस्थान एस्पस प्रयागराज से संबंधित है। Also, it is cooperated with Indian Academy of Acupuncture Science Aurangabad, Association of Acupuncture Science Practitioners AASP मुंबई महाराष्ट्र एंड ईशान बैंगलोर। विगत 2 वर्षों से संस्था के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार के रूप में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्यूप्रेशर ACU-CON का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश और विदेश के प्रख्यात विशेषज्ञों के द्वारा एक्यूप्रेशर की विधा की गूढ़ जानकारी सभी के साथ शेयर की जाती है और संस्था एक्यूप्रेशर के डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज का संचालन भी करती है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य निशुल्क सेमिनार, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स एवं वेबिनार्स के द्वारा अपने उद्देश्य कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट को प्रोत्साहित करना है और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनवरत रूप से कार्यरत है। इस हेतु आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सर को माइक हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच साक्षी, संस्था के बहुत ही सुंदर परिचय के लिए। और आज के इस वेबिनार में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं डॉक्टर रूमी बैराम जी सर, डॉक्टर हेमंत ठक्कर सर और डॉक्टर मयंक शाह सर भी जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस हमारे 3rd ACU-CON वेबिनार में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसबी पास का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, योगा या डगलेस थेरेपीज को जन जन तक पहुंचाना है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने इस 3rd वेबिनार को आयोजित किया है कि देश में जितनी भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से संबंधित विधाएं हैं, उसमें जो नए रिसर्चेस हैं, डेवलपमेंट्स हैं या जो देश में श्रेष्ठ रूप से कार्य कर रहे हैं, उन सभी चिकित्सकों को हमारे थेरेपिस्टों से मिलाना, परिचय करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आज के वेबिनार के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रूमी बैराम जी के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ एसबी पास की ओर से डॉक्टर जकिया मैम को, जो कि वो खुद
एक MBBS डॉक्टर हैं, DGO हैं, DNP हैं। तो ओवर टू डॉक्टर चकिया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका इस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत है। डॉक्टर रूमी बैराम जी, I think he needs no introduction. He's an icon in himself. A person who has converted his successful running surgical hospital into a acupuncture center does not need any introduction. So he has been pioneering acupressure all over India and in Maharashtra. He is the president of Maharashtra Acupuncture Council. And wasting no more time, it's a pleasure to invite Dr. Rumi Bairamji to give his blessings on this occasion of conference organized by SB Pass. Over to you, sir. Thank you, Dr. Jain, and your organization by PAS, and all your co-workers for inviting us to join this conference. I'm very glad to see that many organizations have come forward. Many organizations come forward to support you. And many senior doctors have taken up to come forward and share their knowledge as speakers. I am really thrilled to see the number of participants, which are nearly 329 as of right now, and joining hands. Dr. Jain, please carry on with such seminars, webinars, and I request every organization to come forward and not only support Dr. Jain, but support each other. We all must be united together so that we can take acupuncture forward and make it very famous all over Maharashtra and all over India. Looking forward to the successful third International ACU Conference. My good wishes to all of you and all the speakers. Thank you. Thank you very much, sir, for your blessings and supports. Now I invited our next guest, Dr. Hemant Thakkar. For introduction, I will invite Mr. N.V. Ravindra from Ishan, Bangalore. A towering personality in the field of acupuncture of our country, Dr. Hemant Thakkar. He also needs no introduction because he's been propagating acupuncture throughout the country since more than 3 decades. He is the chairman of NH Integrated Cures at Mumbai. See, he's a renowned acupuncture therapist with nearly 4 decades of experience. He has got very deep knowledge on anatomy and physiology because he's a qualified homeopathy doctor, and since 1986, more than that, he is known for getting acupressure recognized in the state of Maharashtra with his team. He played a vital, pivotal role, important role since 2012 to 2017, when the Maharashtra government has recognized acupuncture as a therapy, alternate therapy and a science through its gazette notification. Many people have fought for that, led by none other than Dr. Hemant Thakkar. He is, not only that, he is a nominated council of, member of the Acupressure Council of Maharashtra, and he is also a registered practitioner of acupuncture in Maharashtra. He has got a fantastic clinic in Mulund, Bombay, wherein the people goes to the clinic with confidence, and it is known as sure shot treatment place. Whoever goes there will certainly get benefit because he has got so much of knowledge and wisdom, deep knowledge
on this alternate therapy, divine therapy. More than that, he is a very good propagandist of acupuncture by conducting lots of free camps and all over the country, especially in Bombay and Maharashtra and all part of the country. And he has presented keynote address and papers in very lots of seminars and conferences, not only in India, even in abroad. He has pursued his studies not only in India, in Russia, in Ceylon, Malaysia, and even in New Zealand. He got a diploma awarded in 2001 with distinction. And he's a very good teacher also, because he conducts online and offline courses and prepared more than 2,000 students all over the country by relentlessly propagating acupuncture. He's a very well-known figure. We are all blessed to felicitate him and honor him, because it is our honor to felicitate such a big personality in the field of acupuncture in our country. And I welcome him to bless us and greet us on this third international conference of our SBPAS. So welcome, Dr. Thakkar Saab. Thank you all. Good morning to everybody. And thank you very much for such a great introduction by you. I'm a good human being. That is what is enough. Why? Because when we practice, this is what counts. All right. Thank you, SBPAS, for having me. And I wish कि आपका ये सिलसिला हमेशा जारी रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के बारे में बता पाएं और इसका प्रोपोगेट इतना करें कि हर घर में हर व्यक्ति को इस चीज की सुविधा प्राप्त हो. So I wish good luck to all the participants and to SBPAS also. Thank you, Dr. Antim Jain. Thank you very much, sir. आपके आशीर्वाद के लिए, गाइडेंस के लिए और हमेशा मार्गदर्शन के लिए. और निश्चित रूप से आपने जो कहा, हमारा भी उद्देश्य वही है कि हम जन जन तक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर विधा को फैलाते रहेंगे. और मैं अगले आज के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मयंक शाह सर को, और आपके इंट्रोडक्शन के लिए आमंत्रित करता हूं मैं मिसेस उमा राव मैम को. As an amateur acutherapist, I'm indeed honored to introduce Dr. Mayank Shah. Dr. Mayank Shah is an internationally renowned physician specializing in healing through natural therapies and energy medicine. He specializes in integrated holistic approach, and he has amalgamated multiple therapies to heal all kinds of difficult illnesses. Dr. Mayank Shah has extensive clinical experience of over 40 years and has treated thousands of patients all over the world through his clinics in India and Singapore. He has also authored books on healthcare and regularly conducts training workshops on natural healing, and has been a keynote speaker in many national and international conferences. Dr. Mayank Shah has done extensive research in healing through natural principles, and he is the inventor of mind therapy, therapeutic diets, Presic theory, and healing exercises. His achievements are endless. He is one of the most senior acupuncture practitioners in India, and he has studied different styles of acupuncture originating in China, Korea, Japan, France, and India. He has undertaken an extensive research in the Indian style of acupuncture and using its technology for the benefits of thousands of his patients. Dr. Mayank Shah has developed a unique acupuncture protocol with amalgamation of element diets, meridian exercises, acupsychology,
and lifestyle wisdom to heal even chronic illnesses. He is associated with various acupuncture organizations and working towards the development of this science in India. So we can see what an eminent personality we have with us today. I extend a warm welcome to Dr. Mayank Shah for this conference. And sir, I request you to take over and bless the conference and participants. Thank you, ma'am, for such an elaborate introduction. And when we hear the elaborate introduction, we forget what we have to speak. And that is what happens. So I also sincerely thank Dr. Antim Jain for thinking about inviting me to this August conference. This third International ACU Conference 2024, इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं शुभेच्छा तो जरूर दूंगा, लेकिन इस शुभेच्छा के साथ एक शुभ संदेश भी देना चाहूंगा। आज इंडिया एक ज्ञान का केंद्र माना जाता है। आज नहीं, अनादिकाल से इंडिया एक ज्ञान का केंद्र रहा है। लेकिन when I have traveled all over the world, I have seen that others respect our knowledge more than Indians. We have to understand this factor, because every organization does something, but the focus should also be on our national knowledge inheritance. योग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की परंपरा इंडिया में भी रह चुकी है, लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहीं पे भी इंडिया का नाम इसमें नहीं रहा है। As far as entrepreneurship is concerned, as far as proper, I would say, justification is concerned, सिंगापुर में भी योगा सेंटर्स रहे हैं, वो सब वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। इंडिया का एक भी सेंटर वहां पे नहीं है, अच्छा, कमर्शियली एम्प्लॉयड। तो इसी तरह हम फॉरेन टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कभी कभी तो इंडियन टेक्नोलॉजी फॉरेनर्स उसको पैकेज करके हमें दे देते हैं और हम उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसबी पास वगैरह, प्रयागराज के इंस्टीट्यूट्स, दे आर ऑल वर्किंग टू सम एक्सटेंट अबाउट इंडियन टेक्नोलॉजीज। सो आज इस अवसर पे आप सभी को, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट and the participants, I would like to give a message. Please focus on Indian technologies also. They are also beautiful. And for your kind information, I have launched the first Indian technology called NASA, NASA, New Advanced Scalp Acupuncture, by which instantly, within 2 minutes, we are relieving pain. We are helping patients with bad brain conditions. We are helping patients with chronic conditions just by 1 or 2 needles in the brain. It is called NASA. We just had a successful workshop and many people have benefited, many students have benefited. So friends, I take this opportunity to thank the organizers once again, and I thank all of you for a patient listening, and I hope my message gets through to all of you, and let us work together for a healthier, better India. Jai Hind. Thank you, Doctor. Thank you very much, sir. Thank you. डॉक्टर मयंक सर हमेशा ही इंडियन सिस्टम और इंडियन एक्यूप्रेशर सिस्टम को डेवलपमेंट की बातें करते हैं। मेरी जब भी सर से चर्चा हुई तो सर का एक विजन होता है कि हम इंडियन सिस्टम, जो कि हमारा ओरिजिन सिस्टम है, और इसी को डेवलप करें। तो मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरह से हमें गाइडेंस दें कि हम इंडियन सिस्टम्स को और अच्छे से डेवलपमेंट करें, ताकि हम अपनी सभ्यता को लोगों तक पहुंचा सकें थेरेपी के रूप में। और आज के इस आयोजन में हमारे साथ डॉक्टर रूमी बैराम जी सर, डॉक्टर हेमंत ठक्कर सर और डॉक्टर मयंक शाह सर जुड़े। मैं आप सभी को एसबी पास की ओर से और हमारे सारे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से धन्यवाद देता हूं
कि आप अपने अति व्यस्ततम समय से हमारे साथ जुड़े। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि देश के बड़े सीनियर एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर देबाशीष बख्शी सर। बख्शी सर भी देश का एक बड़ा जाना माना नाम है एक्यूपंक्चर की फील्ड में। और आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी एसबीपास टीम के श्रीनाथ जी को। Namaste. Good morning, everybody. I would like to invite Dr. Debashish Bakshi, and who is going to talk about the importance of traditional diagnosis in acupuncture. Before that, a brief introduction to Dr. Debashish Bakshi. He has done his MBBS from the Calcutta University, postgraduate certificate in acupuncture, Nanjing, China. Member Apex Committee on Acupuncture, ACA, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Member elected Council of Acupuncture Therapy, Government of West Bengal. Member Acupuncture Degree Course Syllabus Committee, Maharashtra University of Health Science, MUHS, Nashik. General Secretary, Acupuncture Science Association, ASA, India. Director, Principal, Head Department of Acupuncture and Integrated Medicine, Ranajit Memorial Hospital and Acupuncture, Yoga, Naturopathy, College of Research and Indian Research Institute for Integrated Medicine, IRIIM, a Government of India recognized research institute, SIRO, and Government of West Bengal Council of Acupuncture and Yoga Naturopathy, affiliated and registered training institute. He is an expert in traditional tongue and pulse diagnosis, and he is an academic committee member, Acupuncture Department of Oriental Medicine, the Global Open University, Nagaland, India. He is a trainer in charge, PGD course in acupuncture, Indira Gandhi National Open University. Many more accolades in his name. I would like to hand over to Dr. Debashish Bakshi and welcome him to this particular webinar. Thank you. Namaskar to each and everyone. There is a very good gathering. I have seen that more than 368 people participated. It is really a good gathering. And unfortunately, earlier I could not join any other your conferences. Anyhow, that I missed those occasions. Now, thanks, Dr. Jain. Actually, this is our OPD time. I have kept my OPD patient because Saturday, Sunday are both are full working day here. So anyhow, for this occasion, I have managed to some time for this gathering, because as a senior most acupuncturist in India now, and just on 1st March, we are going to celebrate our Guru's birth anniversary, 113th birth anniversary, Dr. B.K. Basu. That will be in every acupuncturist in their clinic on group or association wise, they organize these things. We also organize every year in different ways, public gatherings, medical camps, seminar, essay competition, many ways we do it to remind the lessons of Dr. Basu, the spirit of Dr. Basu, being an MB doctor from the Calcutta Medical College, the oldest medical college of Asia. Now, this year, the college will complete 190 years. Fortunately, I am also a graduate of that college. So we are grateful that the oldest medical college of Asia produced one medical graduate and who has introduced acupuncture in India, and being a student. We 4 of the last students were there. So we have taken the responsibility now to not only to spread it,
already it has spread all over India. Not to every corner. There are many due work is there, but our main work is to educate the new generation to pass over the baton, which we have for the last 71, we have learned acupuncture from Dr. Basu. So now we are regarded as an oldest acupuncturist in India with that experience for 53 to 54 years. So our main task is now to develop transfer our knowledge to our next generations so that they can finish. Many unfinished works are there. They can complete that thing. Only 2 states are recognized. Government of India is now at presently as they are moving very slowly. They took 2005, they have recognized as a mode of therapy. 2019, there is a recommendation from the Department of Health Research. So it was as a system of medicine. Definitely that is a qualitative development, which I want to discuss these things with you in my presentation, because it has a direct relations with this our diagnosis part. So now I request all of you to hear. This is that what we want to do. It is a core concept of our whole acupuncture science. Not only acupuncture science, in any medical science, that if we do not pay our attention to the core concept, many other thousands of issues, thousands of methods, technologies will come. But the core issues is first to be highlighted and to be digested properly, and to put stress on that thing, keeping the main stress on that. Then we can do many other spread of different streams, different techniques, different methodologies. But this is the core concept, is a very important thing, which I want to discuss with you. I am going to share the screen. Yes. So, is it visible to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, importance of traditional diagnosis. It is not tongue diagnosis. Remember, that was almost my identity throughout India and other countries also. But it is the traditional diagnosis as a whole, including tongue parts including. I am going to the total aspect of the diagnosis in acupuncture. So, first of all, we must understand where we are here. As the time is not too much, it will take many hours for discussing the whole issue. In future, if it is needed, I can do you if you are interested. This time, it is a very hectic time, and I could not get much more time for preparation, the only things. Just a minute. You know the Indian Council of Medical Research, which is it is under the Ministry of Health, Department of Health Research. That is the ICMR is the pioneer and the main leading body which guides the Government of India's health policy. Almost every people, they have heard of during our Corona times what ICMR is studying. What is the ICMR viewpoint? In worldwide WHO viewpoint, and in India, ICMR experts. ICMR experts, the Government of India, they take it. Yes, it is a guideline. So ICMR, when given that guideline for any new system, when the people they apply, there are many new systems. Only in our country, there are allopathy, there are 6
our Ayush systems are there. So 7 systems, and acupuncture in 2 states it is recognized. Not centrally it is as a mode of therapy recognized. So it is not included officially in the whole list. So that allopathy system and other Ayush systems everywhere, other than this one, there are many other claims are there. Many other claims. I cannot give you the full list here. Many other systems, many other therapies are available in the world and also in India. So there are many claims and many discussions are going on. Still now, I know regarding the recognition of electrohomeopathy discussion is going on in the ministry. It is not yet finished. That was started with our acupuncture in 2017-18, but it is still going on. So for new system, what the ICMR says that you have to fulfill 2 important criteria. That criteria, it is called the essential criteria, and one is called desirable criteria. This essential criteria means that you must fulfill this criteria, and desirable criteria means if you can fulfill these things, it is better. If you cannot, it will do. So desirable means it is okay. That is, if you can do it or may not be. But essential criteria, without filling that this criteria, you cannot proceed. You cannot claim it as a system of medicine. Yes, acupuncture or any other system. And all these our medical systems which is recognized in our country, that is best, that is they have fulfilled this essential criteria and desirable criteria. What is the essential criteria? What is the meaning of these 2 criteria? That is, I am telling that what is exactly the meaning of this essential criteria and this our desirable criteria. Essential criteria means actually from the theory point of view. That is, it is based on that is a completely new concept that it cannot learn from any other system. Original, this concept must be there, the theoretical background. What is the theoretical principles? All must be original one. Secondly, diagnosis must be original. That is very important. Methodology must be separate one. It cannot be, you cannot copy from the other thing. Your all this work from A to Z of a medical system, whatever we are claiming medical system, it must be completely separate from any existing system. Remember, completely existing, separate from the existing system. From theory, practice, diagnosis, differential diagnosis, your instrumentation, everything should be totally different. And desirable criteria means actually if you have some manpower is there, strength is there. Okay, how much manpower is there? That is okay. That is at this present moment it is not recognized. Maybe manpower may not be very good. Or what are the institutions are working? What are the literatures are there? So these are all comes under the desirable criteria. It may vary, country or system wise, and how much this practice is there. It may vary. And what we have done when this ICMR given this criteria in 1992, we have many other organizations are submitted. We have also submitted from our institution, Indian, which I represent here, Indian Research Institute for Integrated Medicine. This is the only research institute in acupuncture in India, only research institute. It is in the DSI recognized research institute. So we have placed these things, that is what is that essential criteria and desirable criteria. I still remember this letter came from the ICMR, it is only 2-page letter. And our reply was more than 540 pages. You can understand what are the extensive way, and we have compiled the whole acupuncture theory, practice, diagnosis, methodology, safety, many other things, co-indications, contraindications, many other things, all these related things of any system that we have included there. And after a long period of our discussion and negotiation, many other organizations all over India, many other organizations submitted, and then ICMR agreed it. Yes, acupuncture, that is, can be regarded as a new system
So then only we went to this, when we went to this, the call of this acupuncture DHR, Department of Health Research, they have asked for new system, any application is there, claim for this recognition. When we applied from this acupuncture, with different 4 organizations we have applied. So when it was placed, and ICMR already at that time, it was a good thing, Dr. Katoch was there. He was the ICMR Director General, who later on who came to the after retirement to the Department of Health Research, and he took the charge of this whole acupuncture recognition process. So we are very fortunate to get sometimes the person becomes an historic one, but we got it from Dr. Katoch, DC Katoch. It's extremely beautiful person, knowledgeable person, and great supporter of acupuncture. So then we have what ultimately done, that acupuncture proved all these 2 criteria. So ICMR approved it. Department of Health Research, we have the discussions are there, and they have recommended this acupuncture as a system of medicine. System of medicine, remember, to the ministry in 2019. And for your information, that is mode of therapy. Acupuncture is recognized in India in 2005. It is not then 2019. 2005 it is recognized, but as a mode of therapy. Now, what is the difference between the mode of system of medicine and mode of therapy? That you must understand when you are practicing acupuncture or any acupuncture auxiliaries or any other thing. Acupuncture is a mother system. There are 142 systems or 142 methods are there in whole acupuncture. Very few are practicing now. Many things are still, it is not practiced in the whole world. So only few are practiced. So, but the mother system is acupuncture. So difference, what is the difference between the system of medicine? System of medicine means it is a complete system. There is nothing to borrow for anywhere. And when the system of medicine, when we became an MBBS doctor, everything from that is our knowledge part, that what is our medicine, what is that, how it affects, and every methodology, everything, differential diagnosis, everything are completely separate. That is not borrowed from any other thing. There are completely different things for last 500, 600 years it is going on. So it is a complete system, as like the Ayurveda is age old. Now it has been proved also in different ways. Yes, it is a complete system, as like the Yoga Naturopathy, Unani, your Siddha, they have all proved it. And recently, last one, 2010, is our Tibetan medicine, Sogaripka. So these are all complete system. And what is the benefit? This system of medicine, when you have passed this is that system of medicine, you have learned the system of medicine, you will be termed as a full-fledged doctor of medicine, either in allopathy or in homeopathy or in Sogaripka or Ayurveda or like that. So that means you will be treated as a complete medical doctor. And what is the benefit? You can give all this at legally, you are all this benefit you got it. And you will practice it, they will give the death certificate, they can go to the court, everywhere, medical, legal aspect, they completely fulfill. But the mode of therapy, where there is that therapy, it is only as practiced as a therapy. So they are only termed as a therapist. So therapist has the practice part, it is the knowledge part, that may not be very big difference. Difference is definitely there because they are mostly, they complete the short courses, but they practice it. But this practice usually under some supervision. They cannot be an independent practitioner, so they cannot issue certificates. They cannot issue, especially the death certificate. They cannot go to the court. So this is the mode of therapy, means it is like a supporting to the system of medicine people. So if say everywhere, just I am giving you an example, a physiotherapist now got a very independent status, they got their own councils, other thing. Still, they are supported by the orthopedicians or the physical medicine people. So that is system of medicine people are independent practitioner. And when the system of medicine is there, there will be full-fledged medical college.
MBBS like or BNYS, BHU, like that courses will run. So everybody will pass out there, they will return as a full-fledged doctor. But in mode of therapy, it is only till now, Government of India has allowed only the certificate course. So this is the limitation is there. But in two states, West Bengal and Maharashtra, we have the separate council, independent council is there. So they can run the diploma degree course. There, the system of medicine, you can get it, the system of medicine, your degree in future. Very shortly, it is all are on the going on, discussions going on. As a member of the Nasik Health Science University, we have discussion is going on, and everybody, many people are here, Dr. Beramji, Mayank, many other people, Hemant, all the people are here. So they all know all the things. Now, in system of medicine, independent, this is the one very important thing, which is today's our discussions mostly. In the system of medicine, diagnostic method is the most important thing. If you do not have your own diagnostic method, because diagnosis in any medical system is the core concept. Core concept means that is, yes, we are diagnosing as per definite some theory, definite some methodology, and definite some all these different chapters are there. So on that basis, we have diagnosis, and on that basis of the diagnosis, we have to treat it. Any prescription, if you go for a proper prescription, not just passes by any short prescription, but in a good prescription, you will find any institutional prescription, if you see, you will find they do these things, the case history, there are all these investigations, and then they do the diagnosis. So these diagnoses, then they give the prescription. Yes, this is medicine, you have to take it, or you have to apply this thing, what the yoga, you have to do it, or this is that with a product, you have to take it. So all these things based on this diagnostic method, diagnosis. And for diagnosis, you must know that diagnostic methodology is there. This methodology is the most important thing. And if you do not have that separate diagnostic methodology or diagnosis in a system, you cannot get that independent status. Independent status, it must have, this is comes under the essential criteria, and this is the core concept of the essential criteria. Without the diagnosis, independent diagnosis, you cannot claim it. Yes, there are many things that there. Acupuncture works in this way, acupuncture works in this way. But if you want to prove this thing from the Western point of view, then acupuncture own thing will not come. Many people, they say, that is actually the people, they make a mistake, common mistake is there. What? That method, that is how acupuncture works, that can be explained in many other systems. Many other systems. There are all independent viewpoints. Say there is a pain is there, or there is some weakness is there. How it is relieved? So we can explain in many ways. But itself, acupuncture theory, if you cannot explain it, then you cannot claim it. Yes, I am an independent acupuncture expert or acupuncture physician. As an Ayurvedic physician, yoga physician, or Siddha physician or allopathic physician, they have their independent thing. So this part is very, very important. And without doing these things, it is already in the some of our meetings, in our ethics committee meeting with our DHR meeting, it is sometimes they may raise the questions. There are many acupuncturists, they do not diagnose. They only give some different type of medicines and treatment like that other system medicine they are using. Usually that I have to protest it. So it is not a correct practice. Definitely there is some diagnostic method is there, definitely syllabus is there. We are trying to teach these things, but as the system is not recognized, there may be some lacunas, but it is, we never forward this thing that you mix up other things and mix up and deliver it and you tell this is an acupuncture. It is not like that. It should not be. Then you will be legally in problem. Legally now it is a very great problem. One system people cannot practice the other system. Remember this thing. Anytime if you practice this is the cross-pathy or multiple pathies, you can that will be liable for any time that medical legal action. Remember this thing. Now,
ICMR approved acupuncture as an independent system instead of mode of therapy as it fulfilled both the criteria. Already I told you. Now, what are the diagnostic methods in acupuncture as per the TCM? What are the diagnostic methods? That we must understand it. Now, for knowing this diagnostic method, we have to know that what is the basic concept of acupuncture. Remember the basic concept of acupuncture throughout the world, and as per the WHO viewpoint, that is our traditional Chinese medicine throughout the world, it is accepted as the basic fundamental concept of this is our acupuncture theory. Their complete conception is there, complete conception. Chinese traditional medicine is a very big philosophical concept, as like our Ayurveda concept. There are many methodologies are there in Ayurveda, as like yoga as an universal concept, naturopathy universal concept, and there are some methodologies are there. So what are the diagnostic methods that is our in acupuncture as per the TCM? That is, we have to have 4 diagnostic methods. These are the 4 diagnostic methods. We must understand it. We must learn it. Now, before going to this one thing you must understand, what is the basic theory? On that theory, this diagnostic method, and ultimately the diagnosis will come. The concept of the yin and yang, concept of the zhang fu, concept of the qi, blood and body fluid. So all these things, these are our present body structures and philosophical concepts are there. On that basis, that diagnostic method, if we can understand these 4 methods, if we can learn this thing, if we can apply this thing, then we can be called, and later on, that is definitely it will, later on it comes to the differential diagnosis, which is called the, in our traditional science or medical, that is our TCM, differentiation of syndrome. After this chapter, that chapter comes. Then only we can finalize that our treatment principle and the treatment prescription. So there is a big list there, and it is the list not for acupuncture. It is a list for any system. You ask for the Ayurveda, they will tell a Biopitta Cough theory. Homeopathy, they will tell that similar like that. This is the whole concept there, is there. So that is all these things are there. In yoga also, that is that naturopathy, that purifications of the morbid matters, all these concepts are there. So the different concepts are there. These concepts are different ways we have to diagnose these things to reach that is that theory, to according to that theory. And then we reach this is that patient and person is suffering from this problem, and we have to differentiate. There may be similar type of problems in many patients have. We see it. Different type of that headache. There may be 11 types. Dr. Bakshi, sir. Yes. Sorry for interruption. Sir, Yes. kindly change your slide, please. It's Yes, not yes. visible to all of us. Thank you, sir. Yes. Okay. Now, for this, our inspection refers, that is our this process in which the doctor observes with his eyes systemic and regional changes in the patient's vitality, color, appearance, 5 sense organs, and tongue. Tongue comes under this inspection part. Remember, all these things are very, very important. And many traditional practitioners, they develop this type of huge experience. Only by seeing that eye, they can diagnose many things. There are many practitioners out there, even in our the great Dr. B.C. Rai, the first Chief Minister of West Bengal, but he is not known in that way. He is the great allopathy doctor, but with a great vision. Whenever the patient enters the room, he could say that person, his assistant, this patient may be suffering from this problem. So this is the views, this is the eyes, he is seeing there's a patient and their smell, many things he can understand this thing. There are homeopathy practitioners that are 90 years old, now expired. So they have diagnosed in that way. So inspection, it is a great, our knowledge. That is, we have to develop this thing. That is systemic, different, our body's vitality, color, appearance, and 5 sense organ and tongue. Itself, everything are a big subject.
Tongue, already you know the big subject. Sense organs gives many informations. Color of the body gives very good information. Vitality, appearance, everything gives some of our diagnostic, some support. So inspection. Then comes to this auscultation and olfaction. Means hearing. Auscultation may not be only by the putting the stethoscope. Stethoscope is definitely one part, but in traditional way, hearing the sounds and hearing that is our smelling from the patient, what the smell is coming out, all like that. So that gives important tools for our diagnosis. The second method, everything, there are so many varieties, we have to learn it. And then we, on practical part, when we learn under some guru will give you, this is the smell of some our heat type, this is the smell of the cold type, this is the of this our damp type. So you can diagnose these things like that. It is due to these primary pathogenic factors. So that thing you have to understand, this diagnostic method, third number. And fourth one is an inquiry, asking questions about their system activities, all their body's activities, their disease history, and the present sign symptoms, and other conditions related to the body, urine, stool, your sleep, dream, for the female, your menstruation, many other things are there, sweating, perspiration, many other things. These are the common, your physiological parameters, it is called. Physiological parameters, which is very important for us to understand where the body's condition are working properly or not. If they have more urination at night or daytime or less urination, we have some point to note it. Or stool or sleep, whatever the things, that will give us a clue for our final diagnosis. So these are our 4 points. And this the last one is a palpation. This is we have to palpate. There are 4 things are there. We have to use, this is our 4, one is our viewing by our eyes, one is smelling and also our hearing, third one is asking questions, and fourth one is palpation, sparsha. That is the touch. We have to touch the body and to palpate it, then to affected areas, and also to the pulse. This is very important. Pulse diagnosis comes under this palpation. So you can understand tongue and pulse is very important, but not only diagnosis. Never say it is an incomplete conception that I have learned pulse and tongue. No, I can show you pulse and tongue will give you different figures, different your say readings. So you may be confused because you have to see all at a time. Then you can come to a proper diagnosis. This is that importance. This is called, as a whole, it is called the holistic way. And holistic way we have to understand, because that person, maybe I cannot hear properly, but it is not that I cannot see properly. So my hearing may be impaired, my vision is okay. So this type of different type of things are there. The patient may have having some pain outside, or it is relieved by the say heat, but the patient wants to take the cold water. So that means there is a heat inside, outside is cold. So there are all these things we have to note it, that will come under diagnosis. What is the different type of things are there, that we have to note it. And last, by making that analysis, what after this is doing this 4 methods for application, what we do it, that analysis, we analyze and synthesize this pathological condition examined by applying the 4 diagnostic methods. Now doctor can determine the causative factor of the disease and nature of the disease. Then we prove that's the basis for the differentiation of treatment or the syndrome. That is the next chapter actually comes. For which cause this headache is going on. For any, everybody thinks, oh, you are having, you take one medicine, one tablet, one thing. I can relieve you. But the thing is that if you do not know what is the 11, now at present only 11 subheadings are there due to that headache is there. There may be much more. If you cannot differentiate this thing with a proper diagnostic method and differences from diagnosis, your relief will be temporary. Remember this. Proper diagnosis will give you a sustained relief,
And without diagnosis, if you treat symptomatically, it will give you a simple relief. There are many people, they claim, I have given the relief. Will you inquire that after a few months or year, how is the relief is sustainable or not? Or after a few days or a few weeks, again it record. So we have to find out that whole way, we have to apply this thing in a holistic way. Remember this. So, slide kaha gaya? So this is a very important thing. We have to do it. And next point is our where is now it is not moving. Okay. So inspection and palpation, inquiring, auscultation, olfaction, and there is 4 diagnostic methods. What are the diagnostic methods? Oh, it is going back. Now I am going to this inspection part now. Now, inspection, auscultation, and olfaction, inquiring, palpation are the 4 approaches under these pathological changes. They cannot be separated. Remember, here's my last one. Cannot be separated, but relate to and supplementary to one another. In the clinical situation, only by combining 4 can a comprehensive and systematic understanding of the condition of the disease be gained and correct diagnosis made. If you can do this thing, you can give the relief of the headache, not only temporarily, but for a longer duration. The chances for relapse will be very less. This is the difference between knowing the proper diagnosis and giving this treatment appropriately, and without knowing the whole thing, giving the temporary relief. So one thing can be done by a mode of therapy or a simple therapist, or if a system of medicine, if you learn in that way, or if you apply this thing, that you can give a complete result. Not that everybody will be cured by everything, but there is a much more safe treatment, relapse chances are less, and you can reach to the cause of the disease, because in traditional science, cause of the disease is very, very important, not only symptom relief. So any inclination to one aspect while neglecting the other, or there is one-sided, so therefore it is not suggested. So this is the basic concept of our diagnostic method. There are many details are there. I am not going to the things are, the tongue diagnosis, tongue areas, many things are there. I am not going to details today. That when you go to the detailed discussion, that can be done. So I think my time is over, and if you have one or two questions, you can ask the question, and if it is needed later on, we can this diagnosis whole part and what is the background thing. Many things we do for doing this proper diagnosis, we must have a proper understanding of the basic theory of acupuncture. It are all interrelated. With that only people, they apply this tongue diagnosis without knowing the Jiangfu theory, without knowing the yin yang. So there will be very partial effect. You can do this thing. Definitely everything has some effect. But if you know the complete theory, study it series-wise, complete one stage-wise, like that, chapter-wise, then if you do this thing and go to the differentiation of syndrome, then it will be easier for you for this our point selection, therapy selection, methodology, method of the treatment, everything you can do it very nice. So thank you. If you have any other question, then I can summarize तो हो गया है भाई, और summarize में तो traditional diagnosis का है. Thank you, sir. और कुछ क्वेश्चन है किसी का? आपका कोई क्वेश्चन है? If any question, use the chat box, please. Check box. मिल रही है. Check reactions. नहीं वो तो हमारा नहीं. Show caps or records.
चेक बॉक्स में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। Sir, no question. Thank you very much. ओके ओके Thank you for your nice informative presentation for the importance of the traditional diagnosis in acupuncture. और एक्यूपंक्चर की बहुत सारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और उस पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपको डॉक्टर देबाशीष बख्शी सर ने बताया, तो मैं एसबीपास की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपने अति व्यस्ततम समय में से हमारे साथ जुड़े और हम सबको इनलाइट किया डिफरेंट ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर मेथड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई Can I leave now? Yes sir, sure. Thank you very much. Thank you. Okay. So I am sorry that I have to go to the OPD. मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर एम कुमार सर को, जो कि बहुत ही सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट है, और आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरुण भटनागर जी को। नमस्कार सर सभी को। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डॉक्टर एम कुमार जो लेने वाले हैं। अभी हमने डॉक्टर बख्शी को सुना, इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस और सभी चीजों को। हमें शास्त्र कहते हैं, देखिए, शरीर माध्यम खुलम धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए शरीर का स्वस्थ तथा निरोग होना नितांत आवश्यक है। रोगों से आक्रांत शरीर के द्वारा कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता, यह निश्चित है। परंतु शास्त्रकारों ने हमारे शरीर को रोग व्याधियों का एक बड़ा भंडारघर भी बताया है। शरीरम व्याधि मंदिरम, बात भी सही है, क्योंकि मानव शरीर के जन्म के साथ ही रोग और मृत्यु भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैदा हो जाते हैं। रोग निवारण हेतु आज विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं। कहीं हम दवाई लेते हैं, कहीं बिना दवाई। तो एक्यूप्रेशर इज वन ऑफ देम, जो हम विदाउट मेडिसिन करते हैं। और एक्यूप्रेशर क्या है, क्यों है, उस डिटेल में ना जाते हुए मैं सबसे पहले आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हाउ टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बाय एक्यूपंक्चर। निश्चित रूप से आप में कई साथी लोगों को लगेगा कि वेदर इनफर्टिलिटी कैन बी ट्रीटेड बाय एक्यूपंक्चर, बट यस। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर एम कुमार, who is India's leading acupuncture practitioner, giving his services at Lucknow. Dr. M. Kumar is practicing since 1999. That is, he is having more than 25 years of experience. He started with basic acupuncture from Colombo, Sri Lanka, from where he completed his diploma. Thereafter, he completed master diploma in acupuncture from Hong Kong, and also completed his PhD in acupuncture from Hong Kong. Dr. Mahesh Kumar Verma has also done PhD honors from India and DASC from Alma-Ata, Kazakhstan. With extensive professional experience spanning over 25 years, Dr. Kumar is also certified with various certificates in cosmetic and obesity acupuncture, laser and joint pain, Hara acupuncture, hijama, infertility and sexual disorders, tongue and gua sha acupuncture, Richard and Tan balance method. So without taking much of your time, I invite Dr. M. Kumar to take over. Thank you, sir. Sir, please unmute yourself, sir. सर अनम्यूट कर दीजिए आपका। आवाज आई? जी सर। ओके। सबसे पहले थैंक्स एसबी पास organization, and thanks all of the participants. I will discuss how to treat infertility in men and women. Nowadays,
very common disease in male and female. So many problems, so many causes. I share the screen. Just a second. This is my nice clinic. How to treat infertility by acupuncture. Infertility है क्या? What is the infertility? किसको हम infertility बोल रहे हैं या what is the definition in infertility? Inability to conceive after 2 or 3 years of regular unprotected intercourse during the fertile window. Means अगर हम 2 या 3 साल से रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट एनी अनप्रोटेक्टेड मीन्स जैसे विदाउट कंट्रासेप्टिव विदाउट अदर और फिर भी अगर फीमेल कंसीव नहीं हो रही है तो हम उसको इनफर्टिलिटी बोल रहे हैं, राइट? इसको हमने 2 भागों में बांटा है, मेल एंड फीमेल. कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी अगर हम WHO के अनुसार देखें तो मेल एंड फीमेल फैक्टर 10%, unexplained 30%, female factor 30%, male factor also 30%. Cause of male infertility. Number 1, medical cause. Number 2, lifestyle factor. Number 3, TCM factor. Medical cause, mostly poor semen, congenital abnormality, that like a vas deferens and any deformities, endocrine abnormalities, also oligospermia and agiospermia due to unknown cause. कई बार हम मेल्स में देखते हैं कि कोई बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है या है भी है तो बहुत कम है, इतना कम है कि वो किसी भी फीमेल को फर्टिलाइज नहीं करा सकता. डेट इज लाइक दिस. सॉरी. लाइफस्टाइल फैक्टर, साइको इमोशनल स्ट्रेस, heavy intake of the alcohol and smoking, overweight, poor nutrition. Mainly, we are discussing the TCM factor, means acupuncture system, means kidney yin and yang deficiency, damp heat, blood and qi, stagnation. अगर हम सिम्टम देखें किडनी यिन डेफिशिएंसी के तो लाइक दिस: लो स्पर्म काउंट, लो बैक एक, डिजीनेस, टिनाइटस, हॉट फीलिंग इन द इवनिंग, फ्लोटिंग एम्प्टी पल्स विदाउट कोटिंग टंग. Symptom of kidney yang deficiency: low sperm count, low back ache, dizziness, tinnitus, cold back and knee, frequent pale urination, weak and deep pulse, or pale tongue. I think all participants understanding what is the difference the kidney yin and yang deficiency. Kidney yang deficiency means cold back and knee, but kidney yin deficiency like this: hot feeling in the evening and floating empty pulse or without coating pulse. Right? Say, damp heat, painful urination and dark urine, low sperm count, low motility, pulse is silvery, sticky yellow coating and red spot on the root of the tongue. Blood and qi stagnation, distension and discomfort of the testes, hypogastric and perineum pain, low sperm count, poor motility, prostatic hypertrophy, purple tongue,
deep and very pulse. Acupuncture treatment, kidney yin deficiency. For we have to tonify the yin, means we have to use CV4, influence the Chong Mai, CV7 and kidney 13, Ren Mai on the right side, kidney 6 on the left side, lung 7. Kidney Su point, we have to use UB23. Kidney yang deficiency, move the axis in the lower warmer, that is means UB32. Kidney Baksu point, also UB23. Influence of the Chong Mai, kidney 12. Infertility point, kidney 13. Tonify the Chi, means CV4. Daimai on the right side, UB62, and SI3 on the left side. In case of damp heat, Renmai on the right side, kidney 6, and on the left side, lung 7. Resolve the damp, means spleen 9. Resolve damp of lower abdomen, that means CV3. Warm the testicle, we have to use EV5. Axis damp in the lower warmer, that is means stomach 28. We have to use these points, stomach 28, CV5, CV3, spleen 9, lung 7, and kidney 6, or like this. Blood and chi stagnation, Chiang Mai on the right side, PC6, and on the left side, spleen 4. That is male infertility. We have to use at a time female infertility. How to treat female infertility? Many causes, many problems like this. Etiology of female infertility, excessive physical work. Second, excessive sexual activity. Third is constitutional deficiency. Fourth, invasion of the cold, irregular diet, overwork, stagnation of the chi and blood. Excessive physical work like this. Strenuous exercise and the sport, weakness, spleen and kidney yang. That means, suppose female is like this work, so what happened? Weakness of the spleen and kidney yang. At the time the attaining the puberty, uterus is vulnerable stage. Excessive sexual activity during the puberty stage, on the chronic deficiency or the yin and blood. That means, attaining the puberty stage, have a heavy sex. So that means what happened? That is deficiency of the zinc and blood may lead to the malnourishment of the Ren on Chong Mai and uterus. Constitutional deficiency. Women with kidney stones deficiency which may have arisen from being born prematurely and having unhealthy mother. Invasion of the cold. During the attaining the puberty, if a girl is exposed on cold and dampness, the uterus turns into internal cold and obstruct the directing and penetrating vessels, preventing fertilization. Irregular diet. Excessive intake of greasy food and dairy product lead to the formation of dampness in the lower burner, which also prevent fertilization. Dampness in the lower burner easily turns into the damp and phlegm, which may obstruct the uterus, preventing implantation of the ovum. Damp and phlegm is usually called a blockage of the fallopian tube. Coldness in the uterus is due to excessive intake of the cold drink and ice cream and etc. Overwork like this. Stagnation of the chi and blood, possibility with the phlegm or damp, can block the uterus. Now, pathology of the female, the infertility. Connecting with biomedical cause of infertility, directing and penetrating vessels infertility, full wise empty cause of infertility, cervical secretion, pattern of infertility. Sorry. Connecting with biomedical cause of infertility,
according to the modern connection irregularities, absence of ovulation after correspondence of kidney deficiency. Uterine myomas and endometriosis is stasis of blood, damp heat in main cause of the blockage of the fallopian tube. Directing and penetrating vessels infertility. The directing and penetrating vessels always involve the both condition full and empty of the uterus. The deficiency, in case of deficiency, the uterus directing and penetrating vessels means Ren and Chongmai lack the necessary nourishment to nature of the fertilized egg, unproduced egg. In axis condition, pathogenic factor obstruct the structure and prevent their proper chi, blood and essence transformation so that fertilization, implantation cannot occur. Full veg empty cause of infertility. To clear the difference, definite between deficiency and axis, it must be diagnosed clearly whether the woman cannot conceive because of lack of blood and essence. In means in the yin or yang aspect, or because there is a pathogenic factor obstructing the uterus. Full condition like this. In this condition, fertilization cannot occur because pathogens obstruct the uterus and directing Ren and Chongmai. Mean these like cold, blood heat, dampness, stagnation of the liver chi, stasis of blood, and phlegm. Cold. Cold is the main cause of the infertility who is living in the cold and damp conditions. Fire of the gate of life, essential for the fertilization of egg. The essence in its yin aspect, providing the base for conception by producing the egg. But the fire of the gate of life is essential for transformation of the egg into a fetus. Blood heat. Blood and essence are the basis of conception. Means uterus is also called blood chamber. Dampness. Women are prone invade the body from the lower burner. It prevents the proper movement of chi and blood, may therefore lead the stagnation of the chi and stresses of the blood. Unable to function properly, the directing and Ren Chongmai cannot gather the essence for the woman to conceive. Means damp heat obtain correspondence to pelvic and tubal inflammation. Stagnation of liver chi. Liver chi stagnation lead to improper function of the uterus and cause of infertility. Sorry. Stasis of blood and phlegm. Stagnate the blood obstruct the uterus and its channel, and it prevent the proper function of the directing and penetrating vessels, means Ren and Chongmai. Therefore, conception cannot occur. If blood is severe and long-standing, stagnation blood can give rise to abdominal mass, endometriosis, ovarian cyst. Inability to conceive in fatty women is caused by the phlegm. Phlegm means fat, that is a fatty woman. Within the body, blocking the uterus means PCOD. PCOD means polycystic ovarian syndrome is a major cause of infertility obtained occurrence absence obese women. Second, empty condition. Infertility due to the lack of the vital substance, blood and essence. Deficiency of the kidney, yin and yang, the kidney essence. The menstrual function and the uterus really on the yin aspect means postnatal, and the yang aspect of the essence means prenatal.
The yang aspect of essence is the fire of the gate of life, also called minister fire, that is formed at conception. Minister fire generate water. Next, cervical secretion. The cervical secretion is directing manifestation of kidney essence, and its absence means short duration indicate a deficiency of the kidney essence and weakness of the proliferation phase. Cervical secretion just before ovulation means we have to examine the cervical secretion just before the ovulation. Cervical secretion is like this. This is infertile, this is fertile. Infertile means sticky and it's casty pastel-like, thick and creamy lotion-like this. And fertile, wet and watery. Most fertile, agate whitey sticky. There is like a thread, like this. Pattern of infertility. Blood stasis 29.75%. Kidney yang deficiency 27.63%. Spleen and kidney yang deficiency 12.84%. Liver and kidney yin deficiency 11.67. Sorry, liver spelling is by mistake, wrong. Liver Qi stagnation 7.39. Kidney yin deficiency with empty heat 5.06%. Phalegm 3.11%. Cold dampness 2.73%. Like acupuncture treatment. Identification of patterns treatment. Infertility is treated according to the 4 phase of the menstrual cycle. These phases are periodic phase, postmenstrual phase, intermenstrual phase, premenstrual phase. The treatment principle in each phase. Periodic phase, regulate the menstruation. We have to first work is regulate the menstruation. If bleeding is heavy, so we have to stop, and blood is scanty, in which invalidate. Postmenstrual phase, nourish blood and tonify the kidney. Intermenstrual phase, tonify the kidney, yang, consolidate the directing and penetrating vessels, Ren and Chongmai, necessarily resolve dampness and phalegm. For premenstrual phase, tonify yang and move liver qi, necessarily resolve phalegm, invigorate blood, expel cold. According to the Western physiology, these phases are follicular development phase. This starts from about the 4th and 5th day after the beginning of the period. Treatment, tonify the kidney and nourish the blood. Follicular maturity and ovulation phase. This is the intermenstrual phase when the follicles mature and ovulation occur. Treatment, nourish and invigorate blood. Luteal phase. This is the premenstrual phase when the corpus luteal develops and secretes estrogen. Treatment, tonify the kidney and consolidate the directing and penetrating vessels, means Ren and Chongmai. Atrophy of corpus luteal phase. This is the period time. Treatment, invigorate the blood and regulate the menstruation. These patterns, these principles are the 4 and condition. Empty patterns, kidney yang deficiency, kidney yin deficiency, blood deficiency. Full patterns, cold in the uterus, dampness in the lower burner, and blood heat. Stagnation of qi, stasis of blood, then phalegm. Combined patterns as these are kidney yang deficiency with damp phalegm in the uterus, kidney yang deficiency with dampness, kidney yang deficiency with blood stasis, kidney yang deficiency with blood stasis and dampness. That is a combined patterns.
MP patterns, kidney yang deficiency, clinical manifestation, prolonged menstrual cycle. The period could be either scanty or heavy, backache, dizziness, feeling cold, frequent urination, pale and wet tongue, deep and weak pulse. Treatment: tonifying and warm the kidney yang, stop the fire of the gate of life, stent the uterus, means lung 7 on the right side and kidney 6 on the left side. RAN 8 means CV8, okay? GU is a extra point. Kidney 3, kidney 13, UB23, UB52, CV4 and DU4. DU4 means GV4. All with reinforcing method, moxa should be used. All these points we have to use all at type of reinforcing method, and we have to must be use the moxa. Kidney iron deficiency, clinical manifestations like this: long-term infertility, early period and scanty with light-colored blood, 5-palm heat, night sweating, dizziness and tinnitus without putting tongue, floating and empty pulse. Treatment: first of all, nourish the kidney yin and kidney essence. Means lung 7 on the right side, kidney 6 on the also right side. CV4, CV7, kidney 3 means increase the tonify effect. Kidney 13 and spleen 6. Blood deficiency, clinical manifestation these are: first of all, blurred the vision, dizziness, scanty period, depression, pale blood, delayed cycle means short cycle, pale and thin, tongue with fine pulse. Treatment: nourish blood and essence, strengthen the liver and kidney. We have to use these points are Jijong. Jijong is a very important point for infertility like this. Here, CV4, stomach 36, spleen 6, kidney 13, UB23, UB17 with Moxie vision. Full patterns: cold in uterus, clinical manifestation, primary infertility, small clot, painful period, delayed cycle, cold feeling during period, back sore, pale face, thick and pale with white coating tongue, weak and tight pulse. This condition is more common in young girl and women. Treatment: warm and tonify the kidney yang and uterus. This is a principle. Our main aim means main goal. That is warm and tonify kidney yang. We have to kidney yang, tonify and warm, and uterus. Sketcher code: CV7 with GV4, CV2, CV4, GV4, kidney 7, UB23, moxa can be used. But my advice all of you, moxa should be used. Dampness lower burner, clinical manifestation, pain in mid-cycle, delayed cycle, obesity, feeling of heaviness, long-term infertility, vaginal discharge, irregular period, sticky coating tongue with slippery pulse. Vaginal discharge is like this, that, and also white discharge. It's called vaginal discharge. Treatment: remove obstruction from the directing and penetrating vessels, resolve dampness. We have to use Jijong like this. Lung 7 on the right side, kidney 6 on the left side, kidney 14, UB32, stomach 30, stomach 28,
spleen 9, spleen 6, CV3, CV4, no moxa. Never use the moxa on this point, this condition. Blood heat, clinical manifestation are short cycle, up to twice a month. Short cycle means up to twice a month. Hot feeling during period. Mental restlessness, heavy flow, red with yellow coating, tongue with rapid overflowing pulse. Treatment, regulate the period and cold blood. Means lung 7 on the right side, kidney 6 on the left side. We have to use other point like this: spleen 10, spleen 6, kidney 2, L11, pericardium 3, UB 17, CV 4. Also here, no moxa. Stagnation of the chi. Clinical manifestation are breast distensions, painful and irregular period, slightly red on side on the normal color of the tongue. If stagnation of the chi arise from blood deficiency, the side may be pale. That means differentiation. This is a side normal color tongue, it is the pale. Pulse may be choppy and fine in general and slightly worry on the left side. Means we have to check the left side pulse, that is kidney. Worry pulse. Treatment. First of all, regulate the period, eliminate the stagnation, move chi. Move chi means blockage chi and showing chi. We have to regulate this chi. Means we have to use the point, acupuncture point is spleen 4 on the right side and pericardium 6 on the left side. Where other point are CV4, CV6, liver 3, GB34, kidney 14, and TB6. TB6 means triple warmer 6. Stasis of blood, clinical manifestation are abdominal pain, irritability, mental restlessness, irregular and painful period, dark blood with clot, purple tongue with very choppy pulse. Treatment, sorry, eliminate the stasis, pacify the liver and penetrating vessels, regulate the period, invigorate the blood, kidney 6 on the right side, and lung 7 also left side. Spleen 4 on the right side, PC6 on the left side. This is the pattern, main pattern of acupuncture treatment. Okay, TB6, CV6, CV4, kidney 14, stomach 29, liver 3, gallbladder 34, UB 17, spleen 10, spleen 6, and PC6. Combined patterns like kidney yang deficiency with Dam-Phalagum in the uterus. Clinical manifestations are period could be either scanty or heavy. Heaviness in the lower abdomen, excessive vaginal discharge means white discharge, premenstrual breast distension, frequent urination. Backache, dizziness, cold feeling, depression, swelling and pain, prolonged menstrual cycle, body pain, swollen wet tongue with deep, weak and slightly slippery pulse. Treatment, phase 1, no treatment. Phase 2, tonify the kidney yang. Phase 3, resolve the Dam-Phalagum. Phase 4, resolve Dam-Phalagum. Means phase are the periodic phase. Kidney yang deficiency with dampness, clinical manifestation are obesity, vaginal discharge, long-term infertility, irregular period, delayed cycle, mid-cycle pain, frequent urination, cold feeling. Period could be either either scanty or heavy, prolonged menstruation, heaviness, depression, pale and sticky coating tongue with slippery pulse. Treatment, phase 1, no treatment. Phase 2, tonify kidney yang. Phase 3 and 4, resolve the dampness.
Kidney yang deficiency with blood stasis. Clinical manifestations are abdominal pain, dark blood clot, mental restlessness, frequent urination, irregular and painful period, cold feeling, and depression. Prolonged menstruation cycle. The period could be either scanty or heavy, backache and dizziness, pale purple tongue with weak, firm pulse on the middle level. Treatment phase 1, invigorate the blood if not heavy period. Phase 2 and 3, tonify the kidney yang. Phase 4, invigorate blood. Kidney yang deficiency with blood stasis and dampness. Clinical manifestation are these are abdominal pain, dark blood clot, mental restlessness, frequent urination, irregular and painful period, cold feeling and depression, prolonged menstruation cycle. The period could be either scanty or heavy. Backache and dizziness, pale purple tongue, sticky coating pulse with weak slippery, weak firm at the middle level pulse. Treatment, middle level pulse means kungunchi means that will gun pulse. Treatment phase 1, invigorate blood. Phase 2, tonify kidney yang. Phase 3, the dampness. Phase 4, invigorate blood. You have to understand now phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. These are the periodic phase. Period phase, post period phase, all these are like this. We have to already discuss. ALT is term used to include a variety of medical procedure used to bring egg and sperm together without sexual intercourse, act like a IVF. Type of ALT. IUI. This procedure that place the parents and donors prepared sperm into a woman's uterus via a soft catheter around the time of ovulation. Means second, IVF. IVF at a time more common. It is an art of procedure that involves the fertilization of an egg by sperm in the laboratory dish. That is IVF. Number third, frozen embryo transfer means fate. Previously, frozen embryos are stored and transferred into the uterus. Embryos can be frozen at the punctiliar cleavage, the blastocyte stage. Fourth is IVM. We have not discussed at time. Time is very short. Fifth is gamete gift. Gift is a technique where the gamete are transferred into the woman's fallopian tube via laparoscopic procedure. Zygote intrafallopian transfer. This is a procedure the same to gift, but the egg is fertilized in the laboratory. Then the fertilized egg transfer into the fallopian tube by the laparoscopic procedure. Seventh and last, third party ALT. Two main type of the third party ALT treatment. Number 1, couple use donor egg, sperm or embryo. Second, the cause of surrogate carry the fetus. Today is very famous surrogacy. The role of acupuncture in ALT. Physiological effect of acupuncture in the reproductive medicine and fertility. Modulating endocrine and neuroendocrine factors, increasing the blood flow to the uterus and ovary, modulate cytokinase, modulating endogenous regulatory system, including the sympathetic nerve system, reducing stress and anxiety and depression. Role of acupuncture at key stage of the ALT. Preparation phase 3 and 6 months before the ALT or IVF treatment cycle beginning. During the stage, acupuncture treatment can help to reduce the
severity of pre-existing condition known to negatively impact for treatment, that is like a PCOS, means polycystic ovarian syndrome, endometriosis, male factor infertility. Pre-treatment phase up to 3 weeks before the ALT and IVF treatment cycle. During this phase, acupuncture can help to reduce a woman's stress level and relieve some of meditation side effects. The ALT and IVF treatment cycle means ovarian stimulating phase. At this time, women are injected a high dose of FSH. FSH means follicular stimulating hormone in order to produce more than one egg. Acupuncture enhances the ovarian response to medication like this. Acupuncture can also help with endometrium line developing during this phase. सबसे ज्यादा आईवीएफ फेल यहीं पर होते हैं कि एंडोमेट्रियम लेयर फीमेल की डेवलप नहीं होती है और डॉक्टर आईवीएफ कर देता है 2 और 3 मंथ विद इन 2 और 3 मंथ ही सफरिंग फ्रॉम मिसकैरेज. The ALT and IVF treatment cycle, ovarian trigger and final egg maturation. When women inject the trigger medication, this forces the follicles to grow further and the egg within them to mature. Acupuncture treatment between the trigger injection and the egg retrieval procedure helps with the final egg maturation. Therefore, more maturation egg can potentially be retrieved. The ALT IVF treatment cycle means egg retrieval. Acupuncture can be used as an effective pain, only effective pain. Second, the ALT IVF treatment cycle means embryo transfer. Acupuncture treatment around the embryo transfer help to increase successful rate of IVF. The ALT and IVF treatment cycle, that means luteal phase, stress level are probably their highest in patient during the luteal phase. Therefore, acupuncture and emotional support are extremely important during this stage. We have to treat in acupuncture. Acupuncture treatment during in vitro fertilization means IVF is an ALT procedure that involves the fertilization of an egg by sperm in laboratory dish. It is usually divided into several stages. That means first is pre-treatment, second is ovarian stimulation, third is final egg maturation, that is egg retrieval, fertilization of the egg in the laboratory, embryo transfer, as like this. The pre-treatment phase, acupuncture. Acupuncture treatment starts from 4 weeks before the ovarian stimulation. Timing and frequency of treatment once a week. Until the start of ovarian stimulation. Needling method, evenly stimulation. Like this, blood deficiency, this point, kidney junk deficiency, tonifying the regulate, kidney 12, stomach 27, UB 52 with moxa. Means we have to use only moxa UB 52 point, not other. Chi deficiency, tonify and regulate the chi, stomach 27, lung 9, spleen 3. Kidney yang deficiency, tonify yang, kidney 2, GV 4. SAN deficiency, calm the SAN, heart 5, heart 6, GV 24. Kidney in deficiency, regulate the kidney K1, S7. In case of advanced reproductive age, reinforcing and tonifying kidney zinc, kidney 12 and kidney 13, heart 6. In case of thin uterine line,
In case of uterine means we have to diagnose the ultrasound endometrium layer. We have to need endometrium layer is 3 line. If endometrium line is just short, means 1 line and 2 line, so cannot conceive the female. So we have to examine the uterus by ultrasound. If line is short, now 3. So we have to use these points to regulate the blood, UB23, UB17, UB18, and H7. In case PCOS means polycystic ovarian syndrome, drain the dam. Main cause of the PCOS is dam. So we have to use the drain the dam means GB26, stomach 28, that is T2. Sorry, T2 is an extra point. Hyperthyroidism. In case patient is suffering from the hypothyroidism, so then tonify and regulate Qi and Yang. Means we have to use kidney 4, CB17, spleen 3, UB20. In case of hyperthyroidism, main aim, clear heat, nourish and regulate blood. We have to use these points UB21, UB15, UB17, UB18. In case of endometriosis, regulate Chong and Ren, spleen 4, CV2, liver 14, liver 1. Reproductive immune issue, in case of reproductive immune issue है या कुछ और है, तो we have to use spleen 4, lung 7, spleen 6, stomach 36, CV4, liver 3, spleen 10. Final egg maturation and ovulation induction. A woman is deemed ready. Sorry, sir, I request you please summarize the session. Please, sir. Sorry, sir. Oh, okay. Retired with the leading flows the reach 15 to 20 mm in diameter. Once a woman is considered the ready see injection, the human chronic gonadotropin, that is SCG, trigger the medication 5,000 to 10,000 IU of FCH instrument in the potentially. TCM protocol. Administer the acupuncture treatment between the trigger injection and egg retrieval procedure help with the final egg maturation, potentially reaching the more mature egg retrieval. One treatment between trigger injection and egg retrieval with the electrical stimulation to make DCHI. These points are spleen 4, PC6, Jijong with stomach 29. These are the combination of acupuncture. We have to use spleen 4 with PC6 and Jijong with stomach 29, spleen 10, spleen 6, stomach 36, liver 8, CB4, heart 5, and yin tang. Egg retrieval like this. Treatment protocol, acupuncture can be used as an effective pain relieving the method during the egg retrieval procedure. IVF like this. TCM protocol. Patients do not usually need the acupuncture treatment during this stage. Embryo transfer like this. Treatment protocol. Acupuncture treatment around the time of embryo transfer has been shown to increase the pregnancy rates. Timing on the day of the embryo transfer 2, 3, and 5 post egg retrieval. Treatment 1, 25 minutes before transfer. We have to use PC6, spleen 8, liver 8, GB20, stomach 29. Treatment 2, 25 minutes after the transfer, stomach 36, spleen 6, spleen 10, LI4. Acupuncture protocol for IVF and mid-IVF, natural or unstimulated IVF. TCM protocol. Treating the woman with acupuncture during the cycle or neutral and mid-IVF are identical of the approach used in the consummation of IVF. Adapting treatment principle of frozen and embryo transfer like this. Like this. TCM protocol. Pre-treatment cycle, follicular phase, final egg maturation and ovulation trigger, luteal phase. Adapting treatment principle to IUI like this, TCM protocol, stimulation of phase, so and so.
TCM protocol acupuncture treatment during the follicular phase. IUI, stimulating and non-stimulating, should ideally be on the day 1 and 3 of the treatment cycle in order to help with the requirement of the follicles. Acupuncture should then be repeated every 3 and 4 day until either the SCG trigger injection or an arrest surgical. Ovulation is like this. TCM protocol, insemination. TCM protocol, acupuncture on the day of insemination is optional. Spleen 6, stomach 36, liver 3, LI 4, kidney 3, stomach 29, spleen 10, heart 7, pericardium 6, and yin tongue, moxa on the abdominal areas. Luteal phase, TCM protocol, implantation is likely to take the place 6 and 8 days after insemination. Acupuncture during the luteal phase may also reduce the risk of miscarriage. The treatment principle and points are identification to the those used in the IVF. I have to give the TCM. We have to use treatment spleen 4, PC6, liver 3, kidney 3, pericardium 5, CV4, stomach 36, stomach 28, kidney 7, Jijong. TCM protocol, zygote transfer in the fallopian tube if it is essential that there is a free flow of the chi and blood to allow the resulting embryo to travel down the fallopian tube on the uterus. Treatment, acupuncture treatment, kidney 3, stomach 36, liver, large intestine 3, kidney 7, heart 5. Alternatively, IVF embryo transfer protocol may be used. Thank you. Hello. Thank you very much, Sam. Thank you very much for the nice information related to infertility treatment by the acupuncture methods. If any question, please send your message in the chat box. आपका यदि कोई मैसेज है आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं प्लीज। और मैं हमारी सबकी ओर से धन्यवाद देता हूं डॉक्टर एम कुमार सर को, जो एक इनफर्टिलिटी जैसा विषय वर्तमान में जिसके पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और सर बहुत सक्सेसफुली एक्यूपंक्चर के माध्यम से उन सभी का उपचार करते हैं। थैंक यू। सो नो क्वेश्चन। अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के प्रोफेसर श्री राम कुमार शर्मा, और आपके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री एसबी पास की ओर से श्री पीएस तोमर जी को। धन्यवाद सर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर राम कुमार शर्मा का मैं आप सभी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राम कुमार शर्मा जी का शुरू से ही योगा, नेचुरोपैथी एंड एक्यूप्रेशर में रुचि रही है और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा इन्हीं विषयों पर लेकर सिर्फ 21 साल की उम्र में ही आसपास, जिसको कि हम एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्था प्रयागराज कहते हैं, उसमें ज्वाइन किया। यह संस्था आप सभी जानते हैं कि सभी थेरेपिस्ट के लिए एक काशी की तरह है। आपने अपनी मेहनत, लगन एवं अनुभव के साथ अलग अलग पोस्टों पर काम करते हुए आज जनरल और रिसर्च दोनों संस्थान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपकी रुचि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एवं चाइनीज एक्यूप्रेशर में है। इसी पर कार्य करते हुए आपने आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल और डॉक्टर प्रकाश खेतान, जो कि प्रसिद्ध न्यूरोलॉजी सर्जन है, उनके साथ मिलकर एक पेपर लिखा था जो जर्नल ऑफ न्यूरो ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित हुआ और उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके बहुत सराहा था। यह जर्नल अमेरिका और ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी भी आप अलग अलग विषयों में शोध में लगे हैं जो कि मानवता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें मेन है पार्किंसन, ब्रेन स्ट्रोक, रेफर्ड पेन
और विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपके कार्यों के लिए संस्था द्वारा आपको विभिन्न समयों पर उचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है। आपकी सभी उपलब्धियों को यहाँ बताना संभव नहीं है क्योंकि उपलब्धियां ज्यादा हैं एवं समय कम है। हमारा सौभाग्य है कि श्री राम कुमार शर्मा सर द्वारा आज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में YNM द्वारा इलाज इस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी। YNM यम नियम मेरिडियन है जो कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के द्वारा मैक्रो से माइक्रो की तरफ सफर है और इसकी इतनी खासियत है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मोर देन 50% बीमारियों का इलाज सिर्फ इसी में किया जा सकता है, बाकी बची हुईयों का दूसरे में किया जाता है। तो मैं अब श्री प्रोफेसर राम कुमार शर्मा को आमंत्रित करता हूं अब अपना भाषण देने के लिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूं, श्री खेमका सर एवं अग्रवाल सर। और मैं आज यहाँ पे एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में हूँ और ये लेक्चर श्रद्धेय अग्रवाल सर की तरफ से होना था, लेकिन मुझे ये अवसर SB पास ने दिया है, तो मैं विशेष रूप से आभारी हूँ SB पास और डॉक्टर AK जैन जी का, अंतिम कुमार जैन जी का, और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मंच पे। आज का, जैसा कि जानते हैं, मेरा विषय है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से। एंड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है जिस पे काम हो रहा है और उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और परसेंटेज ऑफ रिस्पांस जो पहले हमें मिलते थे किसी भी डिजीज में, उससे कहीं ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है और गंभीर बीमारियों में मिल रहा है। और सबसे खास बात है कि इसमें पॉइंट मिनिमाइज हो गए हैं, सबसे कम पॉइंट्स के माध्यम से हम ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स नहीं यूज करने हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको पेशेंट स्वयं लगा सकता है। तो जैसा कि सर ने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि ये मैक्रो से माइक्रो का ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद माइक्रो और माइक्रो को समझने का अवसर देता है। तो मैक्रो से माइक्रो का मतलब यही है कि जो प्रोटोकॉल हमारे बड़े थे, काफी ज्यादा पॉइंट्स होते थे और सबको लगाने में दिक्कत भी होती थी, सेल्फ अप्लीकेबल नहीं होते थे। ऐसे ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं जो सेल्फ अप्लीकेबल नहीं है, जो हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, तो उसमें चिकित्सक के पास जाना ही पड़ता है। लेकिन इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए उन पॉइंट्स को संस्थान ने रिसर्च के माध्यम से श्रद्धेय अग्रवाल सर के गाइडेंस में कम से कम पॉइंट पर लाने का प्रयास किया है और रिस्पांस को बेहतर करने का प्रयास किया है। तो मैं अपनी PPT शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। और हेल्थ के लिए जो सबसे पहली बात है वो क्या होनी चाहिए, उन विषयों पे मैं बात करूंगा। एक्यूप्रेशर में जो सबसे पहला काम करते हैं वो रेगुलरली कुछ चीजें देखनी होती है आपको, या हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसे आपको समझना ही होगा और इसे देखना ही होगा। प्रतिदिन आपको सोलर प्लेक्सस को चेक करना होता है, जो नाभि होती है, नेवल सेंटर जिसको बोलते हैं। तो सोलर प्लेक्सस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी का। अगर वो बैलेंस रहता है तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं और बहुत सारी गंभीर बीमारियां जो आपको हुई हैं उनसे भी निजात मिल जाती है। सोलर प्लेक्सस मतलब नाभि। तो नाभि को सूर्य, बॉडी के सूर्य की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारा सूर्य है हमारे ब्रह्मांड का। तो हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड का सूर्य नाभि है, नेवल है। इसी से हमको नरिशमेंट मिलता है और हम जब गर्भ में होते हैं तो इससे कनेक्टेड होते हैं और मदर से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद बॉडी अलाइनमेंट हम लोग चेक करते हैं, उसमें हाथ और पैर दोनों का अलाइनमेंट देखा जाता है। उससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी अलाइन है या नहीं है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट, दोनों चीजें इसलिए जरूरी है। आप जानते हैं कि किसी भी गाड़ी का अगर आप देखें, 4 व्हीलर का, तो उसका अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो उसके जो पहिए हैं वो घिस जाते हैं और गाड़ी की चाल पे फर्क पड़ता है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी का अलाइनमेंट नेवल प्लेक्सस के माध्यम से और भी मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम चेक करते हैं आगे, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। एंड जो आर्गन है वो आर्गन कार्य करते हैं, वो नर्वस सिस्टम पे आधारित है बेसिकली। अगर इनर्वेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है,
वो इनर्वेट करता है सारे आर्गन्स को। बैक से, स्पाइन से नर्व्स निकलती हैं और आर्गन तक जाती हैं। तो हमारी स्पाइन भी बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, उसमें कोई डिजनरेशन ना हो। इसलिए हम खाने पीने का, पोस्चर का ध्यान रखें, और उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट देते हैं कि इनर्वेशन प्रॉपर हो, जिससे आर्गन सही तरीके से काम कर सके, उनको प्रॉपर इम्पल्सेस मिल सके। इसके अलावा आपको आपकी ब्रीदिंग पे ध्यान देना होता है। आप जानते हैं कि योग साइंस में ब्रीदिंग पे कितना ध्यान दिया जाता है प्राणायाम के माध्यम से। तो हमारी ब्रीदिंग किस प्रकार की है, वो ठीक ठाक है कि नहीं। वाटर इनटेक हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर बॉडी के कंपोजिशन को देखें तो हमारी बॉडी 70% वाटर से लगभग बनी है, 60 to 70%। तो इसमें अगर वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं, आजकल देखने को मिलता, हर पेशेंट आता है और उससे हम लोग ये पैरामीटर्स कुछ है, भूख प्यास नींद का, जब उसकी जानकारी लेते हैं तो पानी कितना लेते हैं आप 24 आवर में, तो वो बताते हैं कि 3 ग्लास, 2 ग्लास, 4 ग्लास। तो जो बॉडी 70% वाटर से बनी है उसमें निश्चित रूप से वाटर की डेफिशिएंसी होगी, और ये बताता है कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा वाटर का इंटेक अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। वेस्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी के, वो बाहर निकलने चाहिए। अब इसमें सबसे जो खास बीमारी देखने को मिलती है, देखिए आयुर्वेद में 3 प्रकार से वेस्ट की चर्चा की गई है। आपका यूरिन, स्टूल एंड स्वेट, मीन्स पसीना। तो ये तीनों आपके प्रॉपरली निकलने चाहिए बॉडी से, अदरवाइज बॉडी आपकी टॉक्सिक होती है, एसिडिक होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वेस्ट आप ऑब्जर्व करिए कि आपका वेस्ट निकल रहा है कि नहीं, आपको पसीना आ रहा है कि नहीं। पसीना नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप प्रयास करिए। दूसरा, आपका कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन पे आपको फोकस करना ही करना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो नेक्स्ट है कि आपकी एपेटाइट कैसी है, भूख कैसी है, डाइजेशन कैसा है, एंड कलर एंड स्मेल ऑफ स्टूल। स्टूल के स्मेल से और कलर से भी आपको पता चलता है कि आप बीमार हैं या बीमार होने जा रहे हैं। तो ये अगर चेंज हो रहा है, नॉर्मल नहीं है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। यूरिन का कलर बहुत सारी जानकारी देता है, यूरिन की स्मेल बहुत सारी जानकारी देता है, एंड पसीने की स्मेल से भी आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी टॉक्सिक हो रही है, उसमें रिटेंशन हो रहा है टॉक्सिक मटेरियल का। अब हम बात करेंगे कि एक्यूथेरेपी। बेसिकली ये पूरा जो लेक्चर है, जो टॉक है, बेसिकली कहेंगे वो एक्यूथेरेपी पे है और एक्यूप्रेशर पे है। तो इसको डिफाइन किया गया है एक्यूथेरेपी की तरह, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान जिस पे काम कर रहा है, उसमें एक्यूप्रेशर के कई मोड्स को लेके हम काम करते हैं, और उन सबके साथ सबके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम कोई डायग्नोसिस बनाते हैं या ट्रीटमेंट बनाते हैं। तो एक्यूथेरेपी इज द कंबाइन ऑफ एक्यूपंक्चर। बेसिकली यहाँ पे जो थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, जोन थेरेपी, ये भी मींस इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू वॉल, टीशियम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एंड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इन द मोल्ड ऑफ आयुर्वेदा, एंड सीड थेरेपी डेवलप्ड बाय एस्पस। तो एस्पस ने इन सारे सिस्टम को लेके इस पे काम किया है, और उसके आधार पे हम कुछ नई चीजें करते रहते हैं। सो आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन एनर्जी। ये पूरा एनर्जी सिस्टम पे काम करता है। हमारी बॉडी में एनर्जी है, अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कहते हैं कि चेतना नहीं है या प्राण नहीं है। तो एनर्जी का बैलेंस बेसिकली इसमें करना होता है। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी ऑफ एनर्जी। ये जो ट्रीटमेंट है, एनर्जी का ट्रीटमेंट है। हम पॉइंट्स के माध्यम से एनर्जी को बैलेंस करते हैं। फॉर एनर्जी, किस लिए? एनर्जी के लिए। सो इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ विदाउट केमिकल, कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं, कोई मेडिसिन भी नहीं देते हैं, एंड इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। सो इट इज द वेरी पोटेंट ट्रीटमेंट थेरेपी फॉर मेंटल एंड फिजिकल इलनेस बोथ। दोनों में हम लोग, फिजिकल डिजीजेस तो आती ही हैं, लेकिन मेंटल डिजीजेस भी काफी इस समय देखने को मिल रही है, और नए लोगों में, युवाओं में देखने को मिल रही है कि डिप्रेशन जैसे सिम्टम आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स ज्यादा आते हैं, और खासतौर से कोविड के बाद बहुत सारी हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और कुछ सीपी केसेज हैं जिनमें देखने को मिलता है कि उनका फिजिकल और मेंटल वेलनेस दोनों ही गड़बड़ रहती है, सेरेब्रल पॉल्सी। तो उन सब का भी ट्रीटमेंट एक्यूथेरेपी के माध्यम से संभव हो पा रहा है।
वी आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉस्मस, कॉस्मस से बने हैं, और हम लोग जो कुछ भी कॉस्मस में है वही चीज हमारे अंदर भी है, एंड इट इज प्योरली सुपर नेचर थेरेपी मेड बाय सुपर नेचर गॉड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो ये जो एनर्जी है इसका इम्प्लांटेशन उसी समय हो जाता है जब हम बन रहे होते हैं या हम जब गर्भ में होते हैं, और ये सिस्टम पूरा इम्प्लांट होता है, और उसी सिस्टम को हमें समझने की आवश्यकता है। आयुर्वेदा बेसिकली क्या है? आयुर्वेदा मीन्स द नॉलेज ऑफ लाइफ प्रोसेस, एंड वी आर लिविंग बॉडी एज सुन एज वी हैव एनर्जी इनसाइड। सो ऑल एनर्जीज वी गेट फ्रॉम माउथ, दैट इज जो एनर्जी हम गेन करते हैं या जो लेते हैं वो उसके तीन प्रकार हैं। जैसे मैटर की तीन अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार से इसके भी तीन हैं। और एक तो सॉलिड फूड हम लेते हैं, दूसरा लिक्विड लेते हैं, और तीसरा जो है गैसेस के फॉर्म में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बिना जिंदगी संभव नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते। खाना आपको चाहिए एंड वाटर आपको चाहिए, तो इन तीनों का ध्यान रखना है आपको। और आयुर्वेद में तो आहार के बारे में कहा गया है, ये जो उप स्तंभ है आयुर्वेद में उसमें आहार पहला आता है। तो ये आहार के तीनों प्रकार के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले ही हमने बात की थी कि ब्रीदिंग प्रोसेस को आपको देखना है। खाना कैसा खा रहे हैं? आजकल जो भोजन मिल रहा है मोस्टली एसिडिक फूड आप ले रहे हैं, बाहर की चीजें बच्चे प्रीफर कर रहे हैं, ज्यादा प्रिजर्व फूड ज्यादा प्रीफर करते हैं, और उससे उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। सो एयर, वाटर एंड फूड आर सुपर नेचुरल मेडिसिन ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग। ये सब बाहर से आती हैं। दूसरा जो एक्यूप्रेशर है वो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। आयुर्वेद में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। मतलब जो कुछ भी इस लोक में, इस ब्रह्मांड में कह लीजिए, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो सारे भाव पुरुष में प्रेजेंट है। पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों से, लिविंग थिंग से मतलब है। एंड जो कुछ भी इसमें है, बॉडी में है, वही इस ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स में है। सो यावंत पुरुषे तावंतो लोके। और इसी इसी को करेस्पॉन्डेंस का सिद्धांत, तुल्यता का सिद्धांत कहा गया है। तो यहाँ पे आयुर्वेद में तुल्यता बहुत पहले ही बताई गई है, और आप जानते हैं कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, और वो 5 तत्वों को हम जानते भी हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जो आयुर्वेदिक तत्व हैं, आयुर्वेद में आकाश से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। तो पहला एलिमेंट आकाश है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन तत्वों से रिलेटेड हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, उनको कोरिलेट किया गया है। एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीट बॉडी आपकी हथेली में आती है, इसको करेस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं। अब जो एक्यूप्रेशर में मोड्स हैं, ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, वो मेथड्स क्या हैं? तो हम लोग प्रेशर देते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। एक तो ये है, बॉडी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं, उन पॉइंट्स पे हम प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देके एनर्जी को बैलेंस करते हैं। प्रेशर के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पहले वाले इमेज में जिम्मी दिखाई गई है, दूसरे वाले में मेथी सीड्स। उस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, अभी पिछले लेक्चर में जो 2 लेक्चर हुए उसमें डायग्नोसिस की बात की गई थी, सेकेंड लेक्चर स्पेशली इनफर्टिलिटी पे था। तो डायग्नोसिस का मेथड कोई भी हो आपका, आप किसी भी तरीके से डायग्नोसिस करें, लेकिन जब एक्यूप्रेशर पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो उस पे आप ये सीड्स लगा के और एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें हम मेथी मीन्स फेनुग्रीक, एंड इसमें मटर आप यूज करते हैं, पी सीड करते हैं, या चना कर सकते हैं, ग्राम सीड, इन सब का यूज करते हैं। इसके अलावा हम कलर को भी यूज करते हैं। आप कलर थेरेपी इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर में, और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी आप देखेंगे कलर थेरेपी का या कलर का यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। नेचुरोपैथ में भी किया जाता है। तो यहाँ पे सामान्य जो पेन आता है वाटर कलर, उसका यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे टेप दिया हुआ है, पेपर टेप। तो इन पेपर टेप्स के माध्यम से हम सीड्स को अपने हथेली पे जो पॉइंट्स होते हैं उन पे पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, और उसको कुछ घंटे के लिए रखते हैं, उस पर दबाव देते हैं, जिससे हमारे रोग का शमन होता है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें रिंग और करेला ये सब यूज किया जाता है। और ये रिंग जो है छोटी सी जो दिखाई गई है इस इंडेक्स फिंगर में करते हुए, ये रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जॉइंट्स के पेन और टायर्डनेस में आप इसको जरूर हम लोग पेशेंट को रिफर करते हैं और बोलते हैं कि आप इसको करिए दिन में 2 से 3 बार, हर फिंगर में 10 से 15 बार करने के लिए हम लोग उसे बोलते हैं पेशेंट को। तो इससे जॉइंट्स के पेन में बहुत ही रिलीफ मिलता है, किसी भी तरह का जॉइंट पेन हो। इसके अलावा करेला है, इससे हथेली के सारे जो पॉइंट्स हैं वो दबते हैं, इससे भी आपके एनर्जी का संतुलन होता है। कुछ और भी हैं, यूज ऑफ AR2 AR3, बड़े बड़े रिंग्स हैं जिनको हथेली में हाथ में और पैर में चलाते हैं, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं लोअर लेग में एंड इस हाथ में चलाते हैं। इसके अलावा अब जो बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट है उस पे आते हैं। यम नियम, यम नियम आयुर्वेद, इसमें योगा में आप देखेंगे तो योगा से आया है यम नियम। ज्यादातर लोग योगा से ही जानते हैं कि योग में ही इसकी चर्चा की गई है यम नियम की। अष्टांग योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 हैं जो योग के अंग बताए गए हैं, जिसमें से पहला और दूसरा यम है। और वहां पे 5 यम की चर्चा की गई है, पर चरक संहिता में आपको मिलेगा सूत्र स्थान में, चरक संहिता पार्ट 1 है उसमें और 10 नियम है। तो ये जो 10 यम है और 10 नियम है, इसको हमारे एक्यूप्रेशर साइंस में हमारी फिंगर से कोरिलेट किया गया, इनकी संख्या, क्योंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 10 के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इनफाइनाइट वर्ड को 10 एनर्जी के रूप में कंप्रेस करके देखता है। अब वो 10 एनर्जी है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन और आत्मा, 10 है। तो आयुर्वेद में 10 का कॉन्सेप्ट है 10 ओरिजिन कॉन्सेप्ट। तो हर जगह 10 ओरिजिन का बहुत इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद में, और उसी को बेस बना के आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कोरिलेशन उसको किया गया है। तो हमारे हाथ में और पैर में अगर देखेंगे तो 10 फिंगर्स हैं। 10 फिंगर होने से ये इनका जो रिलेशन है वो 10 एलिमेंट से, 10 तत्वों से या 10 द्रव्यों से किया गया है। वहां पे भी 10 है। और अगर यम की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में 10 यम है। पवित्रता, मृदुता, स्पष्टता, अहिंसा, प्रेम, दया, चोरी न करना, दान, क्षमा, सत्य, ये सब आपके मेटाफिजिकल हैं। ये 10 यमाज हैं, यहाँ पे आगे उसी चीज को रिपीट किया गया है। और 10 नियमाज हैं। 10 नियम है उपवास, मौन, मल त्याग, स्वाध्याय, स्नान, व्रत, सरलता, ध्यान, इंद्रिय निग्रह, तप। तो इसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो शुरू होती है संख्या, वो 0 से शुरू होती है। तो 0 to 9 मीन्स 10। तो 10 यम को हाथों में इसको कोरिलेट किया गया हाथों से, और 10 नियम को पैरों में कोरिलेट किया गया पैरों से, और पैरों में इसकी मेरिडियंस बताई गई हैं। उन्हीं मेरिडियंस पे हम ट्रीटमेंट करके फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों तरह की डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हाथ की हथेली क्यों इंपॉर्टेंट है, पैर के तलवे क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों हम इसका सिलेक्शन करते हैं, इस पे हम सबसे पहले चर्चा करें। क्योंकि जो हमारा उपचार क्षेत्र है वो इतना ही होता है यम नियम में, रिस्ट जॉइंट से लेके और इस पूरे पाम एरिया में हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इससे इजी भी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि पंचर में सभी लोग नहीं करा सकते, एक्यूप्रेशर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे बॉडी में हैं, एक्यूपंचर में पूरे बॉडी में है, तो वहाँ सब लोग नहीं करा पाते हैं, निडलिंग नहीं हो पाती है, या वहाँ पे पॉइंट्स लगाना आसान नहीं है, इजी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्क साहब ने सुजोग करेस्पॉन्डेंस दिया था, और उसी के आगे हम लोगों ने जो यहाँ पे संस्थान ने काम किया है, इसी को बेस बना के और यहाँ पे कुछ और वर्क को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें देखेंगे कि हाथ की हथेली को क्यों हम लोग प्रिफर करते हैं। ये जो बोन्स हैं, इन बोन्स के आसपास में स्पेसिफिक पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं और उस पर काम किए हैं और उसके रिजल्ट प्राप्त किए हैं, और उसके आधार पे ही हम लोगों ने इस थ्योरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सबके सामने, और आपसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाइएनएम में जो पॉइंट्स हैं वो बोन के एज पे मिलते हैं, बोन के एज पे, ये जो साइड में एजेस हैं आगे मैं दिखाऊंगा, इन एजेस पे मिलते हैं। तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ये दूसरी सेकंड मेटाकार्पल बोन, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ। दूसरी तरफ देखिए, मॉडर्न साइंस से इसका कोरिलेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे नर्व्स की लोकेशन जरा देखिए। जो नर्व्स हैं वो इस बोन से लगी हुई सारी नर्व्स यहाँ पे हैं, साइड बाय साइड आप देख रहे हैं। और
जब हम इस पे प्रेशर देते हैं या पॉइंट लगाते हैं तो हम इन नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं और इनका जो कंट्रोल सिस्टम है वो ब्रेन में है, स्पाइन में है। यहाँ जो कुछ भी आप करते हैं उसका मैसेज ब्रेन तक जाता है और फिर आपकी एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो जाती है उस पॉइंट की। तो इस प्रकार से हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से नर्व्स को अगर देखेंगे तो हथेली में इजिली स्टिमुलेट कर सकते हैं, बाकी जगहों पे आपको नर्व्स को स्टिमुलेट करने में आसानी होगी बाई प्रेशर। प्रेशर देखिए, और नीचे आइए, अगर देखिए पैरों में, जिसको जहां पे हम लोगों ने नियम की मेरिडियन बताई है, तो ये इस जगह पे भी देखेंगे तो नर्व्स की लोकेशन आपको साइड बाई साइड बोन के मिलेगी। यहाँ देखिए, तो इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया और ये बहुत ही प्रभावी ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं अब द वायनम? इसमें बेसिकली आपको आप हैंड्स की और फीट की, पिछले वाले इमेज में देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए इसका केयर करना बहुत जरूरी है। सो केयरिंग ऑफ हैंड एंड फीट इज एक्यूप्रेशर एक्यूथेरेपी। आप सिंपल इससे बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और प्रेशर देके से डेली आप इस पे प्रेशर दीजिए और इसमें सेंसिटिव पॉइंट को आपको खोजना है। मैं आगे बताता हूं आपको कि कैसे इसमें प्रेशर देंगे। So the human body is well equipped with the software, with all the machines, and its control device is the arms and legs. Not only the arms and legs, but the palms and feet. So our feet and acupoints are directly stimulated when we walk and when we run. This is wonderful e-management, autonomous management by self-understanding and self-realization. वॉक करते हैं, वॉक करने के लिए क्यों कहा जाता है? उससे सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है और पैर के पॉइंट्स भी दबते हैं। इसके अलावा क्लैपिंग आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्लैपिंग पे बहुत फोर्स देते हैं, तो उसमें भी क्लैपिंग करने से डेली नियमित रूप से ये जो पॉइंट्स हैं ये स्टिमुलेट होते हैं और बॉडी में एनर्जी का बैलेंस होता है। तो इसलिए ये पाम एरिया एंड फिट एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फुली एक्सपोज है, जहां पे आप इजिली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पॉइंट्स को लगा के रख सकते हैं कुछ देर तक। तो यहाँ वाईएनएम में सबसे पहले चार्ट को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, जो वो यहाँ पे है। देखिए, इसमें आपने देखा कि मेटाकार्पल बोन को हमने पीछे दिखाया था। मेटाकार्पल बोन के बगल में तीन तीन पॉइंट्स हैं। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इन पॉइंट्स को 0, 1 और 2 नाम दिया गया है। इधर दूसरे वाले सेकेंड मेटाकार्पल पे देखेंगे तो 0, 1, 2 दिया गया है। थर्ड पे भी ऐसे एक तरफ दिखाया गया है, इसमें फोर्थ में भी एक साइड में दिखाया गया है और फिफ्थ में देखिए दोनों साइड दिखाया गया है। तो ये चूंकि यहाँ पे पॉइंट्स की लोकेशन डेंस ना हो, इसलिए एक ही इमेज में दोनों तरफ नहीं दिखाया गया, पर इन पॉइंट्स की लोकेशन दोनों एक मेटाकार्पल बोन के दोनों तरफ एज में पाई जाती है। तो 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब ये इनका जो है मेरिडियन से भी रिलेशन है। तो यहाँ पे साइड में एसआई मेरिडियन है, इस जगह पे एसआई मेरिडियन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुव है 2 नंबर पॉइंट है, उसको देखिए 2 नंबर पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे है, 0 नंबर की लोकेशन इस जगह पे है। आप इधर से आएंगे तो फर्स्ट मेटाकार्पल फिफ्थ मेटाकार्पल बोन को आप देखिए, इसके साइड में यहाँ पे एक ग्रूव मिलेगा। तो ग्रूव में 0 है, लास्ट में जब जाएंगे यहाँ तो फिर 2 है और उसके बीच में 1 नंबर है। ये जो 3 पॉइंट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनका रोल, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर जानते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेजर रोल है वो मेटाबॉलिज्म में, खास तौर से एब्जॉर्प्शन में इसका है न्यूट्रिशनल मटेरियल का। तो SI012 इस पे अगर इस तरह से डेली आप प्रेशर देते हैं तो इस साइड से ऐसे पकड़ के प्रेशर देते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक होगी। तो साइड में इस तरह से 3 फिंगर को रख के विद द हेल्प ऑफ 3 फिंगर्स यू कैन प्रेस हियर ऑन द ऑल दीज 3 पॉइंट्स। इसको आप प्रेशर देंगे और ये प्रेशर 2 से 2.5 मिनट तक दे सकते हैं। दूसरा, इसमें सीड्स लगा सकते हैं, यहाँ पे सीड लगा सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पी सीड्स लगा सकते हैं साइड में, या जो फेनुग्रीक मेथी के सीड्स हैं उनको लगा के इन पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करके आप दबाइए तो निश्चित रूप से आपको कॉन्स्टिपेशन में लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ये साइड बाय साइड इस पॉइंट्स को दोनों तरफ लगाना है। इसी तरह से जो दूसरा चैनल है, दूसरी मेरिडियन है वाइनम का, जो पॉइंट्स है
वो ट्रिपल वार्मर पे मिलते हैं, 0, 1, 2। तो हार्मोन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए एक और फंडामेंटल बात बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इन पॉइंट्स को कैसे आप, इसमें सेंसिटिव पॉइंट को देखना है। आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको कोई थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। आप डेली अपने सेंसिटिव पॉइंट को चेक करिए, इन 3 पॉइंट्स को। जैसे मैं यहाँ पे हार्ट का चेक कर रहा हूँ, ये देखिए, ये हार्ट का, ये 5th है, और 5th मेटाकार्पल में अंदर की तरफ यहाँ पे है हार्ट का 0 नंबर पॉइंट, हार्ट का 1 नंबर पॉइंट, और हार्ट का 2 नंबर पॉइंट। यहाँ पे आप इमेज से इसको देख सकते हैं, और आप खुद अभी दबा के देख सकते हैं, इसकी लोकेशन को मैं फील कर सकते हैं। तो इस पे जब आप दबाव देते हैं तो हार्ट की डिजीजेस से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। डेली आप इस पे करिए, सुबह शाम या 3 बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन पॉइंट्स को, और इसमें जो सेंसिटिव पॉइंट हो उस सेंसिटिव पॉइंट पे, स्पेशली मान लीजिए 0 पे मिल रहा है ज्यादा पेन, सेंसिटिव मीन्स पेनफुल पॉइंट, या 1 पे ज्यादा मिल रहा है, या 2 पे, जिस पे भी मिले उस पॉइंट पे एक सीड लगा दीजिए, मटर सीड लगा दीजिए छोटा सा, या आप मेथी सीड भी लगा के उसको रखिए टेप के थ्रू 6, 7, 8 घंटे तक डेली, कुछ दिनों तक, और इस पे प्रेशर दीजिए। आप लोग अपने से चेक कर सकते हैं कि आपके हार्ट की क्या कंडीशन है। तो इस तरह से हार्ट को प्रोटेक्शन यहाँ से मिलता है। इसी तरह से दूसरी तरफ देखिए, ये लंग्स, LU012 फर्स्ट मेटाकार्पल में मिलता है, और ये साइड में, इनर साइड में मिलेगा टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर साइड। तो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, और ये 2 की लोकेशन है, जैसा इस इमेज में देख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लंग्स के डिसऑर्डर के लिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सिंपल 3 पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल 3 पॉइंट्स को लगा के। ये जो पॉइंट्स हैं, इसके साथ एक और मैं पॉइंट्स आगे डिस्कस करूंगा एलवाई चैनल का। ये 2 पॉइंट फर्स्ट मेटाकार्पल के दोनों तरफ, इन्हीं पॉइंट्स पे ब्लैक कलर आप लगा देते हैं, ब्लैक कलर, डॉट डॉट डॉट, तो कलर थेरेपी के माध्यम से वो ट्रीटमेंट होता है। और वो किसी भी तरह के एलर्जिक कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं उसको। लंग्स की किसी भी तरह की इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स का प्रयोग हम लोगों ने कोविड के दौरान किया था, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो हॉस्पिटलाइज थे, वो जल्दी ही वापस बाहर निकल आया हॉस्पिटल से इनकी हेल्प से, और उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा था इन पॉइंट्स के संदर्भ में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए, इसमें कौन कौन से LU, इस साइड में LI है, इस साइड में CIS थर्ड में, एंड 4th में देखिए ट्रिपल वार्मर है, 5th में हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगली इमेज में जाइए तो यहाँ देखेंगे ND 0, 1, 2। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें 3 पॉइंट है, 0, 1 और 2। तो जो 0 नंबर पॉइंट है उस पे जब ट्रीटमेंट देते हैं तो बॉडी के अपर पोर्शन मींस हेड रीजन का ट्रीटमेंट होता है, हेड की समस्याओं के लिए। और जो 1 नंबर है वो बॉडी के मिडिल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और 2 नंबर बॉडी के लोअर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो लोअर पोर्शन में आप 2 को चेक करिए। लोअर पोर्शन में अगर कोई भी दिक्कत है, जैसे किसी को यूट्राइन फाइब्राइड है, मेल में प्रोस्टेट है, या गोनेडल डिसऑर्डर है, पेल्विस एरिया के किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम है, तो 2 नंबर सारे चेक करिए। और जिस जिस 2 नंबर पे आपको पेन मिले उस 2 नंबर पे आप सीड्स लगा के कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और देखेंगे कि आप डे फर्स्ट से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, सारा फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पे जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, और पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, उस फीडबैक के आधार पे हम बता रहे हैं। और इसके बहुत सारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो हमारे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत ही मिनिमम पॉइंट से किया जा सकता है। अब आइए नियम। जो नियम है, यम के बाद नियम, पैरों की मेरिडियन को हम लोगों ने नियम की मेरिडियन कहा है। और पैरों में सिमिलरली जो हैंड में आपने देखा, उसी तरह से बोन के लेवल पे इन पॉइंट्स की लोकेशन है। यहाँ देखिए, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकेंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल एंड 5th। तो इसमें जो फर्स्ट मेटाटार्सल पे मेरिडियन स्थित हैं, लोकेटेड हैं, वो है SP, एंड दूसरी तरफ है लीवर। तो इसमें भी उसी तरह से 3 पॉइंट है, SP0, SP1, SP2, लीवर 0, लीवर 1, लीवर 2। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे स्टमक 0, स्टमक 1, स्टमक 2। और इसी फिंगर पे अंदर की तरफ दूसरे इमेज में दिया है कि JD की मेरिडियन है, ज्वाइंट
से रिलेटेड या बोन्स की मेरिडियन उसको हम लोगों ने कहा है। जैसे ऊपर इस चार्ट में देखेंगे तो आगे आएंगे तो जेडी मेरिडियन देखिए, नेक्स्ट जेडी मेरिडियन को यहाँ अलग से दिखाया गया है, क्योंकि एक ही चार्ट में सारे पॉइंट को लोकेट करने पे बहुत करीब करीब पॉइंट्स दिखते हैं, तो लोकेट करने में लोगों को दिक्कत होती है, चार्ट का यूज करने में दिक्कत होती है, इसलिए अलग अलग चार्ट बनाए। तो यहाँ देखिए जेडी मेरिडियन बोन हेल्थ मेरिडियन के नाम से इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, और बोन की किसी भी प्रकार की हेल्थ के लिए, बोन का डिजेनरेशन हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, उसमें इस पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। और इस पे जीरो, जेडी 0, जेडी 1, जेडी 2 पे आप सीड्स लगा के कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इससे इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसी तरह से इसमें जो मेरिडियन है फाइबर है, फैट मेरिडियन है, एसके मेरिडियन है, इसका यूज आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इसी क्रम में अब प्रोटोकॉल पे हम लोग आते हैं। तो प्रोटोकॉल में देखेंगे नेवल अलाइनमेंट। नेवल अलाइनमेंट के लिए आप यहाँ पे एक हाथ के हथेली में सेंटर में मटर सीड लगा के आप दबाव देंगे दोनों तरफ, और इससे आपकी नेवल का जो डिस्टरबेंस है, इम्बैलेंस है, जो नाभि खिसकी है, वो आपकी सेंटर में आ जाती है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा केसेस ब्रेन से रिलेटेड आजकल देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ओल्ड एज की प्रॉब्लम हो या यंग एज में या बच्चों में, सब में। तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम के लिए भी, यंग एज में है, एडल्ट में है तो भी, और जो बच्चे हैं उनमें भी आप चिल्ड्रंस में भी ट्रीटमेंट देंगे। और ये 4 पॉइंट्स ऐसे यहाँ दिखाए गए हैं जिनको अनेक ब्रेन के डिसऑर्डर में आप यूज कर सकते हैं। और इन 4 के प्रयोग से हम लोग डिप्रेशन के ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं डिप्रेशन का। इसमें डिमेंशिया का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है किसी को तो, एंजाइटी किसी को है तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट यहाँ पे आप करेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, देखिए पहला पॉइंट है सेकेंड मेटा कार्पल बोन पे आउटर साइड में, मतलब स्मॉल फिंगर साइड में आप कहेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट्स लगाना है। दूसरा, थर्ड मेटाकार्पल में अंदर की तरफ, मीन्स थंब टुवर्ड थंब साइड, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। और फोर्थ मेटाकार्पल में दोनों तरफ, आउटर साइड मीन्स टुवर्ड स्मॉल फिंगर कह लीजिए, और इनर साइड टुवर्ड्स थंब साइड, ये पॉइंट्स लगाने। ये 4 पॉइंट लगा के आप इमिडिएटली आप 1-2 दिन में डिप्रेशन, एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर में इसका रिस्पांस आता है। किसी का मैनिक बिहेवियर, कोई बहुत हाइपर एक्टिव है बच्चा, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं, और यहाँ पे आप ये पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैग्नेट यहाँ पे नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैग्नेट भी यूज करते हैं, बेसिकली मैग्नेट यूज करते हैं। अगर जो लोग जानते हैं मैग्नेट लगाना, इस पे टोनिफिकेशन करेंगे, व्हाइट ब्यूल मैग्नेट का यूज करते हैं, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स हैं इस तरह के डिसऑर्डर में। इसी तरह से आई डिजीजेज है, इसमें किसी का देखिए बहुत कम पॉइंट्स हैं, एक पैर में, एक फुट में आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, तो दोनों तरफ मिला के 6 पॉइंट होते हैं। आई डिजीजेज में यहाँ पे जीबी, ST0 एंड UB0 का सिलेक्शन करते हैं। मैं साथ में, अगर कुछ लोग जुड़े होंगे जो जानते होंगे इस थेरेपी को और इससे परिचित है, उनके लिए बोल दे रहा हूँ कि जीबी ST0 को सीडेट करते हैं। ये देखिए, ये वाला पॉइंट जीबी है, यहाँ ये पॉइंट ST है, और बाहर वाला UB पॉइंट है, UB0 है, UB0 को टोन करते हैं। और अगर आप टोन सीडेट नहीं कर पाते हैं तो इन पॉइंट्स पे आप सीड्स लगा के छोड़ दीजिए, और बीच बीच में आप दबाते रहिए। तो इससे ये फीडबैक आधारित है पूरी तरह से कि इससे विजन इंप्रूव करता है लोगों का। रेटिनोपैथी जहाँ पे कह दिया गया था, उसमें भी इससे देखा गया है कि इंप्रूवमेंट आया है, विजन ठीक हुआ है। तो रेटिनोपैथी में भी हम लोग इसका यूज करते हैं आई डिजीजेस में। साथ में डायबिटीज का ट्रीटमेंट तो देते ही हैं। गैस्ट्रिक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको ये पॉइंट यूज करना है, 3 पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है, और इसमें देखिए साइड में ये दोनों तरफ, दोनों हथेली में दिखाया गया है 0, 1 और 2, इस पे सीड्स लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। इसके अलावा नीचे देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ओल्ड एज ट्रीटमेंट। ओल्ड एज में क्या होता है कि बोन की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है लोगों की, ओल्ड एज से मतलब यहाँ बोन हेल्थ से संबंधित है बेसिकली। और जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट की समस्या लोगों के सामने, यूरिन का रिटेंशन, प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें आप ये पॉइंट्स हाथ और पैर में, तो हाथ में 2 पॉइंट्स लगाने हैं आपको। यहाँ पे लगाना है AD1
एंड ND1, इन 2 पॉइंट्स को टोन करना होता है। तो फर्स्ट सेकेंड मेटाकार्पल में आउटर साइड में, स्मॉल फिंगर साइड में, एंड इसमें थर्ड में आपको आउटर साइड में ही लगाना है, यहाँ पे बीच में पॉइंट्स जो 1 नंबर पॉइंट्स है दोनों तरफ। इसके अलावा पैर में आपको 3 पॉइंट्स लगाने हैं यहाँ पे। तो इससे आपका ओल्ड एज की कई समस्याओं में मेंटेन रहेंगी, उसका ओल्ड एज में जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में आपको लाभ मिलेगा। बोन की हेल्थ में, जो बोन का डिजनरेशन होता है तेजी से, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जॉइंट्स पेन आते हैं, नी पेन आ जाता है, बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह जैसे चेंजेस जो आते हैं, उसमें भी इससे लाभ मिलता है। तो ये इसीलिए इसको ओल्ड एज प्रोटोकॉल कहा गया है। तो ये सब ये क्या स्क्रीन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से लग रहा है इंडिकेशन है कि टाइम हो गया है। नहीं सर, वो नेटवर्क की वजह से हुआ है, आप कंटिन्यू करिए सर। जी जी जी। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट्स हैं। अब ये चार्ट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको रिफर कर सकते हैं और खुद अप्लाई कर सकते हैं, और हमें अर्थात संस्थान को आप फीडबैक भेज सकते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स को मैंने लिया है जो जनरली हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। सो हेयर लॉस ऑफ हेड, हेड का जो हेयर लॉस की एक समस्या है वो बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल रही है आजकल। तो बाल अगर झड़ रहे हैं किसी को, तो उसके लिए JD, ND एंड TW0, इसकी लोकेशन मैंने यहाँ दिखा दी है। इन पॉइंट्स को आप टोन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सीड्स लगा के आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ देखिए इस जगह पे। तो मेरे ख्याल से लोकेशन आपको अब समझ आ रही होगी कहाँ कहाँ पे लगाना है, इमेज देख के लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपोथायराइड में, इस जगह पे आप TW1 नंबर पॉइंट है YNM का, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट लगा के आप हाइपोथायराइड में लाभ लेंगे। ओवेरियन सिस्ट, पाली PCOD, PCOS, ऐसी समस्याएं जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो उसमें 3 पॉइंट पैर में लगाने हैं आपको, दोनों फिट में दोनों तरफ लगाएंगे, और ये है फाइबर स्किन फैट के पॉइंट्स, और एक हाथ में आपको लगाना होगा। तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स की लोकेशन हमने दिखाई है। फोर्थ मेटाकार्पल में, मेटाटार्सल में टुवर्ड्स थंब साइड एक पॉइंट है, और थर्ड मेटाटार्सल में दोनों तरफ, दोनों एज पे एक एक पॉइंट्स लगाए गए हैं। सिमिलरली जैसे लेफ्ट में वैसे ही राइट में अप्लाई किया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो TW2 नंबर पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे TW2 हाथ में आता है, तो इसको दोनों तरफ आप लगा के इसमें आप लाभ देख सकते हैं। फिर महिलाओं में, बच्चियों में, खासतौर से युवतियों में PCOD, PCOS की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। प्रोस्टेट में आप देखिए, जो ओल्ड एज के लोग हैं, प्रोस्टेट में एक अलग से यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया है। तो प्रोस्टेट में ये लिबर 2, SK फाइबर 2 यहाँ पे आप लगाएंगे। तो यहाँ ये लोकेशन है फर्स्ट मेटाकार्पल मेटाटार्सल में, एंड इसके अलावा थर्ड मेटाटार्सल में दोनों तरफ। कोई इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, तो ये बोथ इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे, हम लोग इसको पित्त जॉइंट बोलते हैं या मिडिल जॉइंट आप कहिए, और राइट थंब के इस बेस जॉइंट पे, प्रॉक्सिमल जॉइंट पे आप ब्लैक कलर लगा के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, और हर व्यक्ति को, कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि एसिडिटी नहीं है। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, पूछा जाता है, तो बहुत लोग शर्म के मारे 1-2 लोग कह देते हैं कि नहीं मुझे गैस नहीं बनती। लेकिन गैस कैसे नहीं बनेगी जब आपका खाना इतना एसिडिक है, आपका फूड, और आप की अनियमितताएं हैं, तो गैस तो सबको ही बनती है। तो गैस अगर आप मैनेज करें तो बहुत सारे पेन और एक्स आपके कम हो जाते हैं बॉडी के। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बाई कलर ये ट्रीटमेंट दिया गया है, हाथ की हथेली में, लेफ्ट हैंड में, इन जगहों पे कलर लगाना है। अगर आप ये सभी कलर लगाते हैं तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का आपका ट्रीटमेंट होगा, एसिडिटी का होगा। लेकिन सिंपली आप डाइजेशन के लिए भी, ना सिर्फ एसिडिटी, डाइजेशन का गड़बड़ है और डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेंटर लाइन से आना है ऐसे सीधे, और इस जगह पे सेंटर लाइन पे एक ग्रीन डॉट बिंदी के साइज का लगाना है आपको। तो ये लगा के आप रख सकते हैं कोई भी, और इसका आप लोग लगा के फीडबैक दीजिएगा कि कैसा है ट्रीटमेंट ये। इसी तरह से सर्वाइकल की समस्या है, सब लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हम। तो उसमें निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, OPD में आते हैं, वो सर्वाइकल और लंबर के आ रहे हैं, और MRI लेके आते हैं, उनमें सीवियर डिजनरेशन, मतलब
यंग एज के बच्चों में ओल्ड एज जैसा डिजेनरेशन देखने को मिलता है। तो एक ये समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्रोनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लाइटिस है, उसमें यहाँ पे इस जगह पे SI012 पे यहाँ सीधे आपको पेन है तो डिजेनरेटिव है, पेन नहीं है तो भी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आप 3 सीट्स लगा दीजिए और दबाइए इसको। 1 हफ्ते लगा के देखिए, आपके सर्वाइकल की समस्या में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है इस पॉइंट को यूज करने से। तो जिनको समस्या है वो इसको, ये सिर्फ सर्वाइकल के ही नहीं, ये आपका लोअर बैक में भी काम करेगा। तो लोअर बैक के लिए भी ये प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं। बैक पेन अगर किसी को है तो यहाँ पे पीछे की तरफ 3 सीट्स लगा लीजिए, या सीडेशन कर सकते हैं। ड्यूल मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, जो जानते होंगे, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है इसलिए उसको मैंने नहीं रखा है। हर तरह के लोग होंगे इसमें, तो 3 ड्यूल मैग्नेट मोड में लगा सकते हैं। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं करना है। विद द हेल्प ऑफ पेपर टेप सिंपली यू हैव टू पुट हियर सम सीड्स, ग्राम सीड्स या पी सीड्स, सिंपली आप यहाँ पे लगा सकते हैं 3, और इस पे प्रेशर देंगे। इंटरमिटेंटली प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बैक पेन में आराम मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है 3 के अलावा आप यहाँ पे 2 2 4 1 5 लगा हुआ है, तो आप उस लोकेशन में से 3 ही लगा के कर सकते हैं। डायबिटीज यहाँ पे एस हिडन हो गया है, तो डायबिटीज में ये पॉइंट्स देखिए। डायबिटीज तो यहाँ पे आपको लगाना है, डायबिटीज में वाइट ड्यूल मैग्नेट टोन करना है इसमें। ये पॉइंट है SP, यहाँ पे ये लीवर, एंड ये पॉइंट है किडनी 1। तो ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा और डायबिटीज का पॉइंट है, प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अस्थमा की समस्या में यहाँ आप लगाइए। देखिए एक तरफ ही इसमें डॉट दिया हुआ है, लेकिन आपको दोनों तरफ, ये लोकेशन के लिए मैंने रेड कलर से बनाया है, इस पे आप कलर अप्लाई करिए दोनों तरफ, ब्लैक कलर। जैसे इसमें एक में हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, लेकिन ये दोनों तरफ ही लगेगा। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के दोनों एज पे 012 LU012 और LY मीन्स लिम्फ से रिलेटेड मेरिडियन है, LY012 पे ब्लैक कलर लगाने से अस्थमा जैसी और श्वास जैसी समस्याएं ठीक होगी। बच्चों में अगर ये अप्लाई करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है और जल्दी जल्दी कोल्ड एंड कफ के शिकार होते हैं, तो उसमें ये लगा के रखिए तो बच्चों की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है इससे। 012 LU एंड LY012 आप करेंगे तो इस तरह से जो है आप देखिए, ये छोटे छोटे टिप्स थे जिसको मैंने आपके समक्ष रखा। अब यहाँ पे संस्थान के बारे में कुछ जानकारियां हैं। तो अग्रवाल सर जो हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं, श्री JP अग्रवाल सर, वो उनसे ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। बाकी संस्थान के जो बुक्स हैं 180 बुक्स लगभग पब्लिश हो चुके हैं संस्थान की। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की जानकारी है इस PDF में। कोर्सेज के बारे में हमारे इंदौर के जैन साहब कोर्सेज चलाते हैं जो संस्थान द्वारा संचालित हो रहे हैं एक्यूप्रेशर के, तो उसमें भी आप लोग अगर इनरोल होना चाहें तो जैन साहब से संपर्क करके उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, SP पास को स्पेशली, और जो लोग हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, उन सबको थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रोफेसर रामकुमार शर्मा जी, आपके बड़े ही सरल तरीके से YNM के उपचार के प्रबंधन को आपने बताया। और सर, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि जो हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे सीड्स के माध्यम से, मेथी के माध्यम से, तो उसको कितनी देर के लिए लगा के रखना है? क्या YNM पॉइंट बायलैटरल साइड यूज होते हैं? जो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स YNM पॉइंट्स को हमने अलग अलग मेरिडियंस के नाम से बताया था। तो बायलैटरल अगर दिया है तो बायलैटरल यूज करेंगे। जैसे मैंने लंग्स और LY का जिसमें, तो उसमें तो अलग अलग ही है दोनों। कहीं कहीं पे 2 को एक साथ लिया है, कहीं कहीं पे 1 को लिया है। तो सिंपली आप जहाँ पे चार्ट के हिसाब से कर सकते हैं और मेरिडियन के हिसाब से कर सकते हैं। जहां तक पॉइंट्स लगाने के आवर की बात हो रही है, वो आप 7 से 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा आप 12 आवर्स रख सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत ही सरल तरीके से YNM, जो कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के उपचार का एक अद्भुत अंग है, जिसके बारे में आपने जानकारी दी। और मैं यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा कि एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान एस्पस प्रयागराज देश का एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में अनुसंधान का एक बड़ा केंद्र है, जो कि एक्यूप्रेशर में लिटरेचर्स के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर करा रहा है। और एसवीपास सेंटर इंदौर एस्पस प्रयागराज की तरफ से 2001 से अथोराइज ट्रेनिंग सेंटर से, ट्रीटमेंट सेंटर से,
और जहाँ पर हम आदरणीय श्री जीपी अग्रवाल सर के मार्गदर्शन में इन सारे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, प्रशिक्षणों को भी। तो यदि आप में से कोई भी एक्यूप्रेशर के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप एसवी पास से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके ग्रुप में शेयर करेंगे, जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। तो अभी आज के इस कार्यक्रम को समराइज करने के लिए और आदरणीय जितने भी हमारे स्पीकर्स थे उन सबका वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए हमारे सारे एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से मैं आदरणीय श्री एम वी रविंद्रा सर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम कुमार जैन जी. I am very glad the program of today was very, very successful because of the contributions of many people, right from our beloved President, Shri Dr. Alok Dwivedi ji, who was triggered a beautiful environment by, telling about the importance of Prakriti. We are part of Prakriti, nature. Acupressure is a part of nature, Prakriti. And really, that has triggered the whole day's process very nicely. And then our Sakshi ji has rendered a very beautiful prayer on Saraswati ji to invoke blessings from the goddess. And then our Zakia madam has aptly, shortly introduced Dr. Rumi Behram ji. Rumi Behram ji is a very legendary figure in the field of acupuncture in our country. His contribution towards recognition of this science in Maharashtra Legislative Council through gazettes is primary importance. He did a wonderful job and motivated other states. Even, he is influential with central government, ministers at ministry level to spread this knowledge and convince them to, the importance of this science, which is born in India. With the advantage of this has been taken world over, but still we are lacking in that. That point has been beautifully communicated to all the governments and led by Dr. Rumi Behram ji sir. I don't know how to thank, but we are really blessed to have his greetings and blessings on this occasion. My heartfelt thanks to him once again. And then Dr. Hemant Thakkar has also delivered his greetings and blessings, because he is also one of the key persons in contributing for the recognition of the science. And there are if this science has been recognized, I'm sure our country will become medicine free in the days to come. Within the shortest possible, maybe a decade or two, will become like China and Korea, Japan, etc., where the expenses on medical is very low because of acupuncture practice. In our country also, when we have people like Rumi Behramji and Dr. Hemant Thakkar, and many people have contributed. A big list is there. I'm very happy that they have spared their time to come and greet us and support us. And Dr. Uma Rao has, again, excellently introduced Dr. Mayank Shah. Uma Rao herself is a doctor, PhD doctor, and a exponent of acupressure through our Ishan and Aspas. She is a faculty, and aptly she has introduced Dr. Mayank Shah, who has again, inspirited and motivated us by his greetings and supported us. Our heartfelt thanks to him. And then the paper presentation session has begun with Dr. Debashish Bakshi sir, who is from Calcutta. He was introduced by our senior and very learned person, Mr. Srinath ji. And Dr. Bakshi, his topic was on diagnosis. He has thrown some new light on diagnosis, because we did not know what is essential and what is theoretical. The meaning of
essential and desirable. There is a lot of difference between these two, and more than that, according to TCM, according to our acupressure, what are the 4 diagnosis methods which are very, very, efficacy wise, it is very useful. Without using any instrument also we can treat. But however, he has suggested that, we had to, according in wherever who practices acupuncture has to be guided under registered medical practitioner. It's a very valid legal point he has exposed. And then due to short of the what I felt for the whole this thing, today's proceedings, I think half an hour is not because their experience of decades, they are giving it to us in a silver spoon. We could have, if time permits, we can, in the days to come, we can give a little more time if possible, because it was so meaningful, full of essence. So we are all really blessed to have them and supported in such a wonderful manner. And then coming to the second lecture by Dr. Mahesh Kumar Vermaji on infertility treatment by acupressure, and he was introduced by none other than Dr. Bhatnagar of our own SB Pass. He is, he is well known to him, so he had in the easiest possible manner, beautifully introduced him, because to introduce a quality like M. Kumar, who has got a very deep knowledge on both English medicine as well as he has blended the acupuncture science with that. That's why he is able to explain so beautifully what is the cause of infertility, whether it is in male and female, and what are the treatment, what is the deficiency, what he has analyzed it in such a manner that it's an eye-opener for us to learn about those things. And more than that, the new insight what he has given about art without sexual intercourse, even without a sexual intercourse, through acupressure, infertility treatment can be given, means it's an unimaginable thing. A new light has been given, of course, with the support of allopathic system. Our intention is to help the patients. But he has thrown a light as to how even acupressure can play a vital role, not only in ordinary infertility cases, which is mainly dependent on stagnation of liver blood, liver QE, and kidney related issues. Kidney essence, kidney yang deficiency, kidney yin deficiency. Yes, thoroughly explained it. It was really wonderful. We are all really had the privilege to be guided and tutored by him. In the days to come, I hope we have some more such opportunities to empower ourselves. And lastly but not least, our beloved, our Professor Ramkumar Sharma ji, I rate him like a Shankaracharya. Shankaracharya was very young. All his disciples are very old like me. He has got such a deep knowledge at his young age. He has become an expert, along with, by the guidance of our beloved President Shri J.P. Agarwal sir, in discovering it's a new Avishkar, this MNM concept, because it involves a deep knowledge of not only anatomy and physiology. It is based on Dr. Wohl's concept of acupressure, TCM concept, Ayurvedic concept, and yogic acupressure, all blended. All the recipe is so beautiful, so tasty, and very user-friendly, with minimum points and maximum benefits. Even protocols, many protocols have been easily
he has explained in the simplest possible manner. Ram Kumar Sharma ji has a habit of, hitting the nail on the head, no beating around the bush. It was wonderful. The whole day session, everybody has contributed for its success. I extend my pranams and heartfelt thanks to every one of them for making this program very grand success. My dear friends, such a great event is happening. We had to spread this knowledge where, all fields from all over the country, whether it is acupuncture or acupressure or homeopathy or any other science, the natural sciences, they come together in a single platform to spread it. We are all really, lucky to be present here, but this has to be encased. What we need is your attention, your, empowerment. That is the aim of our beloved Dr. Antim Kumar Jain, who is following the motto of our Samsthan also. I'm very glad, and I had to thank him also because he is the backbone behind, the brain behind the entire event. So friends, we will meet tomorrow exactly at 10 a.m. And before we close the session, I hand over the session to our beloved Dr. Antim Kumar Jain. Thank you very much, sir. Thank you for the nicely summarization for the whole topics. मैं धन्यवाद देता हूं पुनः आप सबको, हम सबकी ओर से, और आदरणीय श्री रविंद्र जी को जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं इस कार्यक्रम को कंडक्ट करने में। और कल फिर हम सुबह 10 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर सेम लिंक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और जो साथी हमारे आज छूट गए उनको भी आप जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा मिशन है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या उससे जो भी मिली जुली चिकित्सा पद्धति हैं उन सबको आपके समक्ष लाकर उनके साइंटिफिक एस्पेक्ट के साथ बताने का प्रयास करें। और कल हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रोफेसर श्री पीबी लोहिया सर, और साथ में होंगे एक्यूप्रेशर संस्थान के अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल जी, जो कि अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित होंगे, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे हम सबको इस वेबिनार के लिए। और साथ में कल हम कुछ विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक है वो 10 टाइप ऑफ द डायबिटीज एंड देयर ट्रीटमेंट बाय एक्यूपंक्चर मेथड, जो डॉक्टर योगेश कोटकानी बहुत ही सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट है उनके द्वारा होगा। दूसरे कल हमारे एक्सपर्ट होंगे श्रीलंका से डॉक्टर शायरिल, जो कि एक्यूप्रेशर और मसाज थेरेपी के ऊपर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। और साथ में एसबी पास को हमेशा गाइडेंस देने वाली आदरणीय डॉक्टर श्रीमती नीलिमा ठक्कर मैडम होंगी, जो कि थायराइड को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगी। तो इन विषयों के साथ हम कल पुनः आपसे मिलेंगे। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।